today. The first session will be included in inauguration, some puja, a dance presentation, and also a simple award ceremony for those who have done a very remarkable job in social work and academics. In second session, we will be having so many presentators online and offline, those who present their research paper in different languages. Third session will be taken in a two form. One as a dance presentation, as a cultural event and a program, and also for the registration. I am very honored to tell you those who have more than 30, 40 years of experience, not in academics, but also in industry and social services. Students, you are so lucky that you are going to listen experiences of different personalities. We are very thankful to all the people, those who given prestigious time, a very important time from their busy schedule. So I warmly welcome to all the guests, those who have come and those who are on the way. Thank you so much, sir, for giving time. By the time your guests come, I would like to inform that this college, Umiya, Kanya, Mahavidyalaya, is organizing this workshop in collaboration with Research Foundation of India. As those who are from the science background, this name is not having any introduction. Such innovation tremendous job bringing knowledge from teachers to students. So, when a teacher researches something, he or she is not researching his own particular subject, but indirectly he or she giving her best to bring knowledge from their students. So, technical session will be a remarkable session for knowing all the people, those who have done and put their efforts to making research papers. By the time guests come, I would like to mention a few more information about Shri Kanya Mahavidyalaya. This college is started with a dream of bringing students from Mahavidyalaya community on the mainstream of this nation. As we all heard that Bharat is going to be a Vishwa again in coming years. So why not in this our lifetime, we would see this college, we would see this state, we would see this nation again as Vishwa. So our previous generation of Pandita Samaj had dreamed to bring all the girls, those who have not this opportunity to complete their education. In 2008, people of this community started this college only with 54 girls in 3 streams: commerce, plain, commerce computer, and science biotechnology. When we started first year, we got a tremendous hand from all the people, not only from Pandita community, but also those who wanted to bring their girl child into the mainstream. As we always believe that people want to bring education, but they did not have an opportunity. In rural areas, it is very difficult to send girls 20 kilometers, 30 kilometers every day for education. To complete their dream, people from this community started this college, and we feel very proud that in the last 12 years, we have been doing a remarkable job in so many fields. We are very happy to share with you that nowadays we are having 17 different sectors of education where we are feeding our students in commerce, arts,
management, science, and PGDA. Last year only, we also started B.Ed, so that we can bring so many teachers also to bring knowledge in this nation. So this is a small and brief introduction of RFI and Shri Umiya Kanya Mahavidyalaya. I hope you will you will feel that this knowledge of listening all the dignitaries, we all will increase our knowledge and different learning. Thank you so much. Music. Urdu. कैमरा चल रहा है।
भूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ यदि देवीय प्रार्थना से हो तो उसके सफल होने की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है। तो आइए इसी प्रक्रिया में हम माँ सरस्वती मौमिया और माँ भारती से आशीर्वाद लेने के लिए उन सबकी वंदना और अर्चना करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ प्राचार्य डॉक्टर अंकुमार छात्र से कि वे उपस्थित अतिथियों के साथ माँ सरस्वती मौमिया और माँ भारती की पूजा करने के लिए आगे बढ़ाएं। ये स्टार्ट करना तब बोलना करूं। हाँ सर। सर साउंड पर करना करना सरस्वती रहने क्यों तो सरस्वती पूजा हो रही वहाँ पर है यहीं पर है ना। पर वो भीड़ तो है कुछ दिखेगा नहीं। ये देखो और भी ज्यादा भीड़ दिख रही है।
माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने के पश्चात आपके सामने प्रस्तुत है महाविद्यालय के कुछ छात्राएं जो अपने नृत्य के माध्यम से माँ सरस्वती की वंदना और माँ उमिया की वंदना करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। जो छोटे वैसे चालू करना मोबाइल में कम ही रखना काम करो अरे म्यूजिक
इनको चलाना है, इनको चलाना।
एक साथ सब साथ में बोलते हैं मौला की। So, माँ सरस्वती, माँ उमिया, माँ भारती की पूजा, अर्चना, वंदन और आरती के उपरांत अब समय है आज की हमारी अतिथियों का अभिनंदन करने का। अबे तो चले रिवाज के विस्तार प्लीज है ना यार हेलो वो तो ठीक है, तो आप तब लेकर आप बैठ जाए सब आप कर Shri
आगे रखो, आगे उधर रखो, उधर रखो। आप एक और ऊपर चढ़ जाओ। आगे रखो, आगे आगे बेटा नीचे केबल मत सर्वे आउट
हाँ ठीक है सर स्क्रीन पे कुछ चेंजेस होने तो इसको घुमा के आगे जितने भी अन्य अतिथि हैं तब तक वो अपना स्थान मंच पर ग्रहण करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ हमारी प्राचार्य डॉक्टर कन्या साजय मैडम से कि वे हमारे मुख्य अतिथियों कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर नम्रता शर्मा मैडम को लेकर मंच पर उपस्थित हैं। उनके साथ ही मैं ट्रस्ट के सचिव श्री महेंद्र जी पाटीदार जिसे भी अनुरोध करूंगी कि आदरणीय नम्रता शर्मा मैडम के साथ मंच पर उपस्थित हों। मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी मुखाती से अनुरोध करती हूँ कि डॉक्टर कन्हैया आहूजा जी को लेकर मंच पर उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर रमेश मंगल जी। उनको मंच पर आमंत्रित करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ संचालन समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी सेठ एवं समिति के उपाध्यक्ष श्री युवराज जी पाटीदार। मैं RFI के चेयरमैन डॉक्टर सौरभ जैन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आप डॉक्टर राजीव शर्मा जी के साथ मंच पर उपस्थित होंगे। RFI स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गुंजन शर्मा शुक्ला जी यदि उपस्थित हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे स्टेज पर आमंत्रित हों। मैं RFI एमपी स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय प्रसाद जी एवं RFI नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अभय जैन जी से भी अनुरोध करती हूँ कि वे डॉक्टर विनोद कुमार खत्री जी के साथ पुष्पेंद्र दुबे जी से भी अनुरोध है कि कृपया कर मंच पर उपस्थित हों।
So इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम की अतिथियों का सत्कार करें। मैं today's international conference inaugural introduction. As we all know, this program has been organized with the collaboration of Shri Kanya Mahavidyalaya and RFI. Shri Kanya Mahavidyalaya is very heartily welcome all the guests and dignitaries. So let's start our today's program with honoring Dr. Namrata Sharma Madam. डॉक्टर नम्रता शर्मा आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर कन्हैया आहूजा जी। चीफ पेट्रॉन के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश मंगल जी और उन्हीं के साथ पेट्रॉन के रूप में उपस्थित है डॉक्टर राजीव शर्मा जी। विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद खत्री जी। मैं पूरे सदन से आह्वान करती हूँ कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर नम्रता शर्मा मैडम, she is the head of academic staff council and also she is a member of the governing body of our college, Kanya Mahavidyalaya. आपके स्वागत के लिए मैं ट्रस्ट के सचिव श्री महेंद्र जी पाटीदार जी से अनुरोध करूंगी कि वह कार्यक्रम में थोड़ा सा अंतर है क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम है, इसके क्रम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। वैसे तो सूची के अनुसार हमें क्रम को ध्यान में रखते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष का स्वागत करना चाहिए था, किंतु समय की अवधि को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले विशेष अतिथि डॉक्टर कन्हैया आहूजा जी का स्वागत करेंगे। आपके स्वागत के लिए मैं संचालन समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी से साहब से अनुरोध करती हूँ कि वह आदरणीय डॉक्टर कन्हैया आहूजा जी का स्वागत करें। School of Economics. He is a member of G20 Steering Committee, University Connect Initiative, Ministry of Internal Exchange Affairs, RIS. He is the coordinator of UGC Spatial Assistance Program. He is a coordinator for Central with Potential for Excellence in Particular Area, CPEPA, Social Sciences. He is the Chief Managing Editor of Journal of Madhya Pradesh Economic Association. His academic qualification is so long, but I would just only want to mention that he is a very scholar person with PhD in economics. His work experience is very long and only mentioning few of them.
Teaching experience, he is having more than 28 years of teaching experience. He is a very good lecturer and he will have given a lecture as a public speaker, as a keynote address in various national and international seminar conferences and a special lecture discuss methodology in India economic policy issues. He delivered many lectures on current economic issues which have been live broadcast on Vya's higher education channel under Educate and UGC Classroom Lecture Series. So along with that, we are very fortunate that we have a very experienced and learned speaker like Kanya. So let's welcome with our round class Dr. Kanya. इनके पश्चात मैं स्वागत करने के लिए डॉक्टर रमेश मंगल जी जो कि हमारे चीफ पैट्रॉन हैं उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी संचालन समिति के उपाध्यक्ष श्री युवराज जी पाटीदार और IIM के डॉक्टर सौरभ जैन जी। आप तालियां बजा सकते हैं। डॉक्टर रमेश मंगल जी का सत्कार हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि उमिया कन्या महाविद्यालय को बीते कई लंबे समय से आप अपने अनुभवों से पोषित करते आ रहे हैं। नेक्स्ट के समय में भी आपके विशेष योगदान के लिए उमिया कन्या महाविद्यालय आपका विशेष आभारी है। वैसे तो डॉक्टर रमेश मंगल जी का परिचय का कोई मोहताज नहीं, किंतु फिर भी इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए जो कि हमारे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं केवल उनको अवगत कराने के लिए मैं उनका परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। डॉक्टर रमेश मंगल is a national chairman, Global Foundation of Research and Academic Development. He is a national president of Rashtriya Kranti Group of Media. He is the chief editor, Rashtriya Kranti Kapoor National Newspaper. He is the secretary and trustee center for Environment Protection Research and Development. He was a national president of India Commerce Association. He is a former head and a professor Department of Commerce, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. He had been executive member of Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, National Assessor, NEC, India, Principal, NKHS Gujarati College, Director and Principal, Vaishnav Commerce and Management. He is a governing body member of Mahavidyalaya University, Chameli Devi Group of Institutions, Pioneer Institute of Professional Studies, Christian Eminent Professional College, Advisor, PK College, and Board of Studies, Sage University. He had been chairman, Central Board of Studies, Commerce, Madhya Pradesh, and Devi Ahilya Vishwavidyalaya. He published more than 80 textbooks which are approved in different syllabuses of India. More than 40 students of Dr. Ramesh Mangal have been awarded with PhD degree and more than 60 students with MPhil degree under the guidance of Sir. He published more than 100 research papers in different approved journals. He is a keynote speaker and presented his knowledge in various universities. He awarded with Bharat Gaurav Award in Delhi, Best Principal Award by Government of Madhya Pradesh. He is also honored by District Administration for his excellent service and his remarkable work for the society. So, sir, we are very fortunate to have you in this panel.
पेट्रोन के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राजीव शर्मा जी। आप विभागाध्यक्ष हैं पत्रकारिता विभाग, श्री अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर। इनका भी परिचय देना एक औपचारिकता का निर्वाह करने मात्र है, किंतु न केवल मध्य प्रदेश किंतु भारत के राष्ट्रीय स्तर पर और बाहर भी आपने कई जगहों पर आपने इंदौर का नाम गौरवान्वित किया है। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी संचालन समिति के सदस्य श्रीमती इंदिरा पाटीदार मैडम एवं RFI कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजय जैन जी से कि वे डॉक्टर राजीव शर्मा जी का स्वागत करें। हृदय विद्या के क्षेत्र में वो लोग बड़े आगे पहुंच जाते हैं जब पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। तो न केवल शिक्षक के रूप में किंतु एक पत्रकार के रूप में भी आप बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बहुआयामी सफल व्यक्तित्व का नाम है प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। आप एक सुविख्यात अंतर्राष्ट्रीय हास्य व्यंग्य कवि हैं, साथ ही प्रसिद्ध वक्ता एवं पत्रकार भी। वक्तव्य कला के क्षेत्र में द्वितीय योगदान के लिए प्रोफेसर राजीव शर्मा जी को भारत के तत्कालीन 2 राष्ट्रपतियों महामहिम जेल सिंह तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पुरस्कृत एवं सम्मानित किया है। 500 राज्य एवं राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में विजेता होने की उपलब्धि के कारण गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रोफेसर राजीव शर्मा जी का नाम सम्मिलित रहा है। डॉक्टर राजीव शर्मा जी टीवी न्यूज चैनल SR टाइम्स तथा शैक्षणिक समाचार पत्र आर्यमान टाइम्स के संपादक का दायित्व संभाल रहे हैं। अभी तक आपकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने नई महाभारत फिल्म के गीत डायलॉग लिखे हैं जिसमें हेमा मालिनी, राजेंद्र कुमार व मुकेश खन्ना जैसे दिग्गज फिल्म कलाकारों ने अभिनय किया है। प्रोफेसर शर्मा प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं तथा स्टेज एवं टीवी के 300 से अधिक कार्यक्रमों का संचालन कर चुके हैं। कविवर शर्मा अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों का आयोजन कश्मीर से रामेश्वरम तथा मुंबई से दिल्ली तक सफलतापूर्वक कर चुके हैं। केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी राजीव शर्मा जी की कवि सम्मेलन कई बार आयोजित हो चुके हैं। दुबई, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, नीदरलैंड, कतर, वेटिकन एवं नेपाल आदि देशों में भी आपके काव्यपाठ हो चुके हैं। डबल एम PhD वीडियो की शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त कर प्रोफेसर शर्मा जी प्रथम श्रेणी के साथ काव्य में अपना नाम अर्जित कर चुके हैं। अनेक समाचार पत्रों के नियमित स्तंभकार हैं तथा टीवी सीरियल्स के निर्माता भी। संगीतकार होने के नाते आप संगीत जगत की ख्यात संस्था संगम कला ग्रुप की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी हैं। अभी तक कुल 1000 से भी अधिक पुरस्कारों से सम्मानित। जी हाँ, 1000 से भी अधिक पुरस्कारों से सम्मानित प्रोफेसर शर्मा शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर पत्रकारिता विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। आपके निर्देशन में कई छात्रों ने PhD की उपाधि प्राप्त की है। ऐसे व्यक्तित्व को पाकर शर्मा कन्या महाविद्यालय आपका हार्दिक धन्यवाद।
हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर किरण सनूजा मैडम, अतिरिक्त संचालक इंदौर संभाग से। डॉक्टर किरण सनूजा। डॉक्टर किरण सनूजा मैडम, एडिशनल डायरेक्टर इंदौर संभाग। आपके स्वागत के लिए मैं पुनः निवेदन करूंगी श्रीमती इंदिरा जी पाटीदार एवं RFI श्री संजय प्रसाद जी का कि वे डॉक्टर किरण सनूजा मैडम का स्वागत करें। इसी के साथ ही कार्यक्रम डॉक्टर विनोद कुमार खत्री जी हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आप प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय पीथमपुर से हैं। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रामकृष्ण जी पाटीदार एवं ट्रस्ट के सचिव श्री महेंद्र जी पाटीदार। आप दोनों से अनुरोध है कि वे डॉक्टर विनोद कुमार खत्री जी का स्वागत करें। बोल के आ भी गया Dr. Vinod Khatri ji, I'm from PhD, Principal of Government College, Pithambur. He is awarded from Income Tax Department as Gold Medal since last 5 years. He is a master trainer at state level in Lok Sabha, Vidhan Sabha, and local elections. He has trained more than 10,000 people for conducting elections. He has 30 years of teaching experience. He is a motivational speaker and has experience of more than 30 and has published more than 30 plus research papers in different research journals and conferences. आदरणीय विनोद कुमार खत्री जी को अतिथि के रूप में पाकर श्री कन्या महाविद्यालय हार्दिक हार्दिक प्रसन्न है। आपका बहुत बहुत स्वागत। इनके साथ हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे जी। आप रंजीत सिंह कॉलेज से हैं। उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री युवराज जी पाटीदार का कि आप आए और डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे जी का स्वागत करें।
हमारे बीच उपस्थित है जीडीसी कॉलेज से आदरणीय द्विवेदी मैडम। आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी मुकाती जी साहब से कि वे द्विवेदी मैडम का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज के इस कोलैबोरेशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए आरएफआई के चेयरमैन डॉक्टर सौरभ जैन जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगी ट्रस्ट के श्री जीवन किशोर जी नारोलिया एवं श्री कैलाश जी पाटीदार साहब से कि वे आए और आरएफआई के चेयरमैन डॉक्टर सौरभ जैन जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Dr. Saurabh Jain ji is the chairman and the CEO of the Research Foundation of India. He is also appointed as the vice president of World Federation of Science and Technology and president of Engineering Research Foundation. Dr. Jain also involves in Research Foundation of India and consultancy unit named Education Research and Result Analysis Private Limited. Along with, he is involved in a number of companies like ISSI, Consultancy Services, EDU Academics, IMC, ARGA, ERF, Access Technical Private Limited, Blueprint Publication Gallery, and Blackbird International Publication, and many more like Humble House Limited, Canada. He is awarded as a gold medalist in Master of Technology for Government Engineering College. He did first doctorate in Power System Engineering and second doctorate in Control System Engineering. Dr. Jain has organized more than 1,500 international and national events like conferences, FDPs, SDPs, workshops, and talk in multidisciplinary areas. He has published more than 180 research articles in international and national journals.
So please save your flag. The last line is very much important of this introduction. On the name of Dr. Jain, 21 patents and copyrights has published from India. He is expert of solar and renewable energy concept. So thank you so much for having me, sir. Umiya Mahavidyalaya also feel grateful for this collaboration to organize this international workshop. Thank you so much. This collaboration needs no introduction, yet I have given an opportunity to introduce again for Shri Kanya Mahavidyalaya since we are having a different representative in this college today. Shri Kanya Mahavidyalaya Rangwasa is a pioneer education institution. Shri Kanya Mahavidyalaya was established in the year 2008. This college is run by Shri Amrita Patida Samaj Dharmic Evam Sarmatic Trust. This educational institution is important in both quality and quantity parameters. The college has been accredited B grade by NAC. Arts, commerce, science, management, home science, and education department and UG and PG courses are conducted in the college. We are affiliated by Devi Ahilya Vishwavidyalaya and recognized by Department of Higher Education Madhya Pradesh, Bhopal. Recently, B.Ed course had been introduced, which is recognized by NCTE New Delhi. Shri Kanya Mahavidyalaya has been founded with an objective to promote higher education among girls who belong to rural areas in Madhya Pradesh and boarding states. They impart quantitative optimum education at minimum fees. A great deal of emphasis is laid on inculcating in them a sense of responsibility and ethical values. Moreover, the students are taught various skills which promote their interpersonal and entrepreneurial skills to shape up their self-employed individual eventually. In addition to academic pursuits, the students are also inspired to participate in various co-curricular activities and interact with other sports clubs. Industrial visits are also conducted to impart the desired exposure to them. In order to uplift the social stature of students, they are given empirical knowledge, inviting them to understand the realistic approach towards all the challenges that they confront in their lives. It is quite evident that educating a girl is key to educating an entire family. The Patida Samaj sees that the girl student must be imparted exemplary education, primary, secondary, higher level, and higher secondary level, along with higher education. Girls strive untiringly to achieve the vision to develop their unfilled and multiple dimensional personality in terms of assimilating human values and academic accomplishment. So, as to nurture illustrious leaders in all walks of life, backed by spiritual values. In the text, the Umiya has shaped a highly beneficial and efficacious knowledge outlook. A four-core education consisting of intellectual, practical, physical, and above all, aesthetic aspects. So in this last 14 years, this college has been trying its best with the cooperation of trust, faculties, and other fellow members directly or indirectly to shape rural girls to achieve their career. In this conference, we have been very fortunate that we had a great collaboration with a very well-known organization, which has a very famous name not only in India but apart from the India also. I would like to share some introduction and some brief details of Research Foundation of India. Research Foundation of India is strictly working for the social upliftment and higher education quality and inter-research promotion in the form of events like international national conferences, seminars, workshops,
symposiums, and other activities. Research Foundation of India works for the integration of intellectual ideas across the globe to fulfill the thirst of innovation of humanity. As the title of our one, this is also come from this core belief of Research Foundation of India. Research Foundation of India is concerned with improving an educational process by encouraging scholarly inquiry related to education and practical application of research results. It is working for research and development for the higher education and has signed memorandum of understanding with top universities from India. RFI members are faculty, researchers, graduate students, and other distinguished professionals with rich and diverse expertise in education research. RFI does not take any financial sponsor from any government body. Research Foundation of India has organized more than 1,500 plus international conferences and workshops, FGP, symposia, etc. Not only India, but all over the world. Now, RFI having 87 chapters in India and 110 chapters in Asia and other countries, and categorized in 5 boards: West, East, South, North, and Central Zone. So, the introduction itself says this collaboration has so much power to bring forth research in the field of education. The conference shall be graced by leading academician, industry, and very different personality. So it's a formal welcome. I, Darsha Sharma, Department of Language of Shri Kanya Mahavidyalaya, along with my co-anchor assistant professor, Lavina Umale, Ma'am, Department of Chemistry. I'm heartily formal welcome to this conference. Thank you so much. So now it's a time to, so now I would like to request Principal Madam, please bring all the guests on front for the launching of proceedings. Sir, इसकी brightness बढ़ाना है? Are you right?
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री अंबिकाराम पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी मुकामी साहब से अनुरोध करूंगी कि वे चीफ लेक्चरर के रूप में हमें संबोधित करें। कार्यक्रम जैसा कि हम हर एक कार्यक्रम के थ्रू जिस जगह चलने में इस उमिया धाम की रचना करी हम उनका स्मरण करेंगे। पर उमिया माता की, अम्बे माता की, सरस्वती माता की। रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं श्री उमिया कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के पधारे हुए आदरणीय सुश्री मैडम आईनी होमसाई ठाकुर साहब, डॉक्टर कन्हैया आहूजा साहब प्रोफेसर एंड हेड स्कूल ऑफ दी इकोनॉमिक्स देवी अलिया विश्वविद्यालय इंदौर और के हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं सुश्री
कभी आपने सोचा था मोबाइल में आपका वाईफाई बंद हो जाता तो आपको लगता है कि सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्यों? बिकॉज आप देखिए कि 10,000 ब्रॉडबैंड कनेक्शंस बढ़ते हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 1.2 या 0.3% के आसपास हमारी उस पर्टिकुलर एरिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे फर्क पड़ता है। मींस आईटी सेक्टर की जो उन्नति है वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रही है। That is amazing. यदि आईटी सेक्टर में ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, ये सब चीजें यदि हमारी ग्रोथ में हमको प्रमोट कर रही है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, so technology has really had an impact. Already big factor है, साथ-साथ में हमें आपने देखा कि ऑफिस कैसे काम करते हैं। एक जमाना था ऑफिस का काम करने का तरीका अलग होता था। आज कॉर्पोरेट इस तरह से काम करता है। आज के साथ कोई कॉर्पोरेट ऑफिस जाएंगे तो आप पाएंगे तो ऑफिस इज वर्किंग ऑन आईटी। पूरा का पूरा आईटी पे काम करता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम करता है, एमएस पे काम करता है। यदि एमएस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी नहीं है तो कोई ऑफिस आज के साथ में काम ही नहीं कर सकता। पूरा का पूरा बदल गया है। टेक्नोलॉजी ने इतनी जगह बनाई है ऑफिस में। हम जब पुरानी तकनीक के साथ पुराना ऑफिस चलाते थे, एक कपड़े की डिमांड वहां पे बैटरी की गति होती थी और काम चलता था। लेकिन अब नहीं चल सकता। आपकी परचेज से, आपकी सेल्स से, आपका पूरा सिस्टम में सब कंप्यूटर करता है, सब आईटी करता है। तो छोटी सी शॉप की बात कर रहा हूँ, केवल आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर में देखिएगा तो ऑपरेशंस पूरे बदल चुके हैं। तो आईटी सेक्टर में हर फील्ड पे अपनी जगह बनाई है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया और है जिसमें मैं बात करना चाहूँ गवर्नेंस। हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या रही है, हम कहते हैं कि जो विकास हो जाए वो ऊपर से नीचे आते आते उसका लाभ बिल्कुल लोगों को मिल नहीं पाता था। अब आईटी के आने के बाद गवर्नेंस हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। गवर्नेंस का अपना एक रोल हुआ है और गवर्नेंस का एक स्टेट, एक गवर्नमेंट का सेंटर में हो, चाहे में हो, वो अच्छा गवर्नेंस तब दे सकती है जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजिकल सुविधाएं हो और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। अदरवाइज आप गवर्नेंस मैनेज नहीं कर सकते, आप कोई सिस्टम को चला ही नहीं सकते। तो दैट इज द काइंड ऑफ बैकलेशन वी फाइंड दैट टेक्नोलॉजी हैव हैड ओवर द लास्ट। आप एक और देखिए, आप जो थोड़ा महसूस कीजिएगा हाउ बैंकिंग हैज चेंज्ड। आप तो बैंकिंग जाते हैं, आप सभी का बैंक में अकाउंट होगा। आप देखिए किस तरह से बैंकिंग बदलाव आया। आपकी बात ऐसे कितने लोग बैंक जाते हैं, this is my bank, this is my bank, I do everything on my mobile phone, and this is possible all due to technology. Banking has changed. बैंकिंग में आने वाले बदलाव है वो तो आपको बैंक के शाखा को कभी देखना ही नहीं पड़ेगा, तो आने वाले बदलाव बैंकिंग सेक्टर में। तो दिस टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। चाहे वो ऑफिस मैनेजमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, चाहे सोशल रिलेशनशिप्स हो, everywhere banking, everywhere technology had a very deep penetration. उसके अलावा जिस तरह से हम बिजनेस करते हैं, आज जैसे बिजनेस करते हैं और पहले जिस तरह से बिजनेस करते थे, there has been a huge change, बहुत बड़ा बदलाव हमें इस तरीके में देखने को मिला कि बिजनेस का तरीका बदला। लेकिन हम देखिए एक जगह हमको लगता है कि now this government or the government the center, the government state government जो भी हो, अब एक बदलाव की जरूरत है। अभी तक हमारा जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल रहा है, मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स की मैं नॉर्मल बात करूंगा, टेक्निकल बात नहीं करूंगा। हमारा जो भी ग्रोथ का मॉडल भारत में रहा है वो कभी भी टेक्नोलॉजिकल लेड ग्रोथ पे फोकस नहीं किया उसने। अब वक्त आ गया है कि हमें वर्ल्ड के साथ मीट करना है। इफ यू वांट टू कम क्लोजर टू द एडवांस विद द वर्ल्ड। आज भारत की बात करता हूं मैं, why India is playing a very very important role in G20 countries। आज भारत को G20 कंट्रीज की प्रेसिडेंसी दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि उनको लगता है भारत में वो सब संभावनाएं हैं, भारत में एक डेवलप्ड आईटी सेंटर है, भारत में स्ट्रक्चर है और भारत कैन प्ले, इंडिया कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग सम ऑफ द की इश्यूज ऑफ वर्ल्ड। G20 कंट्रीज के कौन-कौन से इश्यूज हैं? G20 कंट्रीज के इश्यूज है पॉवर्टी,
जी कंट्रीज के इश्यूज है क्लाइमेट चेंज, जी 40 कंट्रीज का इशू है एनवायरमेंट, जी 40 कंट्रीज का इशू है आपस में कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ट्रेड रिलेशन एंड बहुत बड़ा एक और कॉन्फ्रेंस है जो यूएस और चाइना के बीच में पिछले 10 साल से चल रहा है, दैट इज करेंसी मैनिपुलेशन। यदि इससे हमको इसको सोल्व करना है तो उसको आपको मिलकर वर्क करना होगा। कारण क्या उसको टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट भारत को आगे टेक्नोलॉजिकल लेड ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को यदि आप भारत छोड़ता है, टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान नहीं देगा, then things will be very very difficult to handle. Then अभी तक जो एडवांसमेंट में मैंने आपसे कहा मोबाइल फोन से एडवांस, आप कहां से कहां पहुंचे मोबाइल फोन की इंडस्ट्री में, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज हमारा 6.88 बिलियन मोबाइल फोन लोगों के हाथ में है। 6.88 बिलियन मोबाइल फोन हमारे यहाँ हमारी जनसंख्या के हाथ में है। एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और मोबाइल बनाने वाली जो भी कंपनीज है वर्ल्ड की, वो भारत में आना चाहती है, वो भारत में अपना प्लान डालना चाहती है। भारत में उस तरह का ब्रॉडबैंड की सुविधाएं है। भारत में इंडिया इज गोइंग टू 5G टेक्नोलॉजी, जो 5G टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। 4G में भी बहुत सारी कंपनी आ चुकी है। दैट्स अ प्लस पॉइंट, वो हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नाउ इंडिया इज एडवांसिंग टुवर्ड्स 5G, और ये भी कहा जाता है कि 5G सुविधा देने वाला भारत में भी कंट्री बनता है तो सबसे सस्ती 5G सुविधा भारत में उपलब्ध है। हम टेक्नोलॉजी तो अपना ही रहे, लेकिन टेक्नोलॉजी को एक आम आदमी तक कितनी सख्ती पहुंचा पाए, वो भी गवर्नमेंट उस पर बहुत मदद करती है। और हमारी जो आने वाली रिपोर्ट्स जो मैं पढ़ पा रहा हूँ कि 5G टेक्नोलॉजी will be available to all of us at a very very cheaper price, affordable price. So that's a big plus point for us. Another is एक बहुत बड़ा चेंज हमने देखा है, जिस तरह की एप्लीकेशन मैंने ली और जिस तरह की एप्लीकेशन आप ले रहे हैं और जिस तरह की एप्लीकेशन आपके बच्चे ले रहे हैं, ये तीनों जनरेशन को आप स्टडी करेंगे, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जो परिवर्तन है कम्युनिकेशन, हमने तो कम्युनिकेशन फाइन करना पड़ रहे थे, वी हैड अ जीरो कम्युनिकेशन फाइन। और आज देखिए आपकी जनरेशन, आने वाले बच्चों की जनरेशन को देखिए, communication doesn't mean only talking. I'm not saying that only talking in Hindi or English. Communication means your stamp to आपकी knowledge है, आप एक चीज को किस तरह से absorb करते हैं, किस तरह से present करते हैं। So that communication is playing a very very important role. only communication advancement के बात में आया है, उसके पीछे बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का। आज बच्चे को कुछ भी मालूम करना होता है, सेट पर जैसा कि वो गूगल पे चला जाता है। गूगल उसको देखिए, गूगल में और रिसर्च में परिवर्तन है। गूगल हमको एक इंफॉर्मेशन देता है, वो कितनी सही है कितनी गलत है, आपको उसका आकलन करना है, वो आपको एक जानकारी दे देगा। हमें तो कुछ जानकारी भी नहीं है। आज हमें कुछ भी जानना होगा तो इमीडिएटली गूगल ट्राई करते हैं। तो ये जो बेनिफिट है, सुविधा है बच्चे को है, ये बहुत बड़ी सुविधा है। आज बच्चे क्लासरूम में आते हैं और फर्स्ट डे से क्लासरूम में आते हैं, पीछे लैपटॉप लेके पढ़ते हैं। अब टीचर बोलेंगे कि मैं अलाउ नहीं करूंगा लैपटॉप, आप नहीं कर सकते, बिकॉज़ आज का बच्चा पीछे लैपटॉप लेके बैठना चाहता है। हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे आते हैं और कहते हैं हैव अ ओन लैपटॉप और अपने वाईफाई से वो बोल पूछता, मैंने आर्गुमेंट किया आपको लैपटॉप क्यों चाहिए, तो कहता है सर आपको मैं किसी अच्छी रिसर्च करना चाहता हूं उस टॉपिक पे, मैं आपकी क्लास में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। दैट इज द माइंडसेट दैट पीपल हैव। दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कहां से आया? बिकॉज़ उस बच्चे के पास में टेक्नोलॉजी है, उस बच्चे के पास में वाईफाई है, उस बच्चे के पास में एडवांस लैपटॉप है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा परिवर्तन है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ में जीते हैं। हमें हमारे पास कुछ चारा भी नहीं है, लेकिन हमें वर्ल्ड के साथ में फेस करना है, हमें वर्ल्ड के साथ में जाना है, हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चाहे मैनेजमेंट के हो, चाहे सोशल साइंसेस के हो, चाहे हिस्ट्री के हो, चाहे सोशियोलॉजी के हो, कोई भी, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, चाहे पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर, हमें टेक्नोलॉजी के साथ में जीना है। बहुत बड़ा परिवर्तन है। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस के तो देखिए, आज वोटिंग होती है और वो मशीन आपको एक दिन में पूरे रिजल्ट दे देती है। मंगल सबसे पहले होता था काउंटिंग करते थे, काउंटिंग में किसी को बोला कि नहीं काउंटिंग गलत है तो 3 दिन दोबारा काउंटिंग करके वोट्स करते थे।
ऑल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन आ रहा है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भारत में जिस तरह का परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आपको आप पाएंगे कि इंडिया इज लीडिंग कंट्री। दैट्स अ कमेंडेबल थिंग। और दूसरी चीज, अब नए परिवर्तन जिसकी तरफ आपका कभी ध्यान गया हो, बहुत जल्दी शायद हम पेट्रोल को भूल जाएंगे, बहुत जल्दी आने वाले सालों में हम डीजल को भूल जाएंगे। जो नए एडवांसमेंट, जिस तरह का इनोवेशन हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आप पढ़ेंगे हमारे पास नया फील होगा। हम पेट्रोल और डीजल से व्हीकल भी चलाएंगे आने वाले 10-15 साल में, जो जिस तरह के एडवांसमेंट आ रहे हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, बड़ी इंडस्ट्री में जाइए, आपके पास डिपार्टमेंट भीतरपुर है, आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाइए, आप पाएंगे हर इंडस्ट्री में एक विभाग होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट का नाम होता है R&D। वो क्या करता है R&D? वो R&D हमेशा कोशिश क्या करता है कि किस तरह से बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को दिया जाए और किस तरह से कॉस्ट को कम किया जाए। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहता है। और आजकल कंपनीज आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पहले नहीं होता, पहले उसको की तवज्जो भारत में नहीं मिलती थी, तो उसका फोकस लोगों को नहीं मिलता। नाउ पीपल आर पेइंग लॉट ऑफ अटेंशन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रीज का रूप भी बदला है। अब इंडस्ट्रीज आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो दैट्स अ वेरी वेरी। उसके अलावा हेल्थ सेक्टर, कोविड-19 ने जिस तरह से हमारे हेल्थ सेक्टर को एक्सपोज किया है, हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। हमारे पास कुछ भी नहीं है हेल्थ सेक्टर में। We were spending just 1.4% of our GDP on health. हमारी GDP का 1.4% हम कर रहे थे, बस बात तो बढ़ रहा है, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने उसको 1.8% कर दिया। पर स्टिल हमारे पास बहुत सारे देश वर्ल्ड में ऐसे हैं जो 19 से 20% अपनी जीडीपी का हेल्थ पे खर्च करते हैं। हेल्थ पे खर्च करना मतलब क्या हुआ? आप सीधा का सीधा ह्यूमन कैपिटल पे खर्च कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या है? I'm a human. I'm human capital. मैं अच्छा हूँ, मैं हेल्थी रहूँगा, I'm going to contribute better in the economic development of my organization, of the country. यदि हेल्थ बेनिफिट होगी तो कहाँ से करूँगा? तो अब कोई नया परिवर्तन आ रहा है, वो हेल्थ सेक्टर पे बहुत टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ सेक्टर। So these are the areas where I personally feel that we have to these are the changes. लेकिन मैंने आपसे कहा कि हर चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। हम यदि टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं तो बहुत कुछ हो भी रहे हैं। हम सोशल फ्रंट पे बहुत कुछ हो रहे हैं, हम पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत कुछ हो रहे हैं, हम इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत कुछ हो रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ क्योंकि बाकी स्पीकर से तो कहीं ना कहीं हमें इंटीग्रेशन की जरूरत है, हमें एक बहुत अच्छी पॉलिसी की जरूरत है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करे, लेकिन अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करे। हम अपने कल्चर के साथ जिए। ऐसा नहीं साइंस टेक्नोलॉजी के साथ में हम अपने कल्चर को भूलता है, सोशल वैल्यूज को भूलता है। सो देयर इज अ नीड फॉर प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ सोशल वैल्यूज, कल्चर एंड साइंस। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड वन मोर थिंग, मैं जाने से पहले एक बात बोलूंगा, नाम इस कंपनी इस प्रोग्राम को दूँ आप बहुत अच्छा काम करते हैं। धन्यवाद सर, आपसे प्रशंसा की इसके लिए धन्यवाद। इसका श्रेय मेरे माता पिता, गुरु और मेरे शिक्षकों को जाता है, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे। हमारी कुछ प्रस्तुतियां ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन भी है। हमारे अतिथियों की श्रेणी में इस उद्बोधन की श्रृंखला में हमारे बीच चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया से डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। तो यदि आप में से किसी अतिथि को व्यवस्था में परिवर्तन करने में कुछ असुविधा न हो तो आपके पीछे वो प्रस्तुति होगी। आप मंच पर भी रहें, मंच पर भी रहें। आपसे निवेदन है नीचे 5 मिनट का कार्यक्रम। तो आपके बीच उपस्थित है डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी। टेक्निकल टीम प्लीज कनेक्ट डॉक्टर अशोक गुप्ता जी। उधर व्यू आएगा, उधर व्यू आएगा।
हेलो करने का बोलिए। ठीक है। पिन सर अजय सर ठीक हो गया। Dr. Ashok Guptaji, we are having Dr. Ashok Guptaji, sir. Are you able to hear us? Please respond so that we move further. लो मैं इधर डबल क्लिक कर तुम मत पढ़ो नहीं होगा आप I will request Dr. Ashok Guptaji, please respond. Are you able to hear us? 2 मिनट जरा 1 minute, sir. हाँ रेडी 30 seconds. Hello. Yes. Am I audible? Yes, sir. Please give us 2 minutes. Okay. Everyone, this is Professor Dr. CMD RFI. I feel honored invited to this international conference, innovation in multidisciplinary areas in the field of commerce, management, science, engineering, medical, education, information, technology, humanities, law, agriculture. This conference is organized by Umiya, Kanya, Mahavidyalaya, Rangwasa, Indore, Research Foundation of India, RFI-CARE for Science and Technology. The aim of this international conference is to provide the most complete source of information and the recent advancements field. This conference covers a broad range of topics in this field. I bring greetings and from the Research Foundation of India. Much has been field of information in the past few years, and there is no doubt that the role of the foundation has evolved and over the years. In the net knowledge global is a crucial economic sustainable development. Now it's my privilege and honor to come resource person is available for the center by all accounts with a very good and diverse and a high level array of. I'm thankful to Dr. Jain under your capable lead. The recognition of the RFI is increasing every day. I'm also thankful to Dr. Jain and the entire team RFI and Organized Institute for the excellent organized conference. I'm thankful to all who have given their support in this international conference and all participants in this event a success. It is indeed an excellent team. May I take the opportunity to convey my very best wishes for an effective, successful, productive conference. Thanks for your attention. Thank you again. धन्यवाद सर। जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही है नवाचार, तो हम सब ने भी देखा इस नवाचार के उदाहरण सामने के केवल ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन से भी प्रस्तुति हो रही है। तो ये भी नवाचार का बेहतरीन उदाहरण है। एक बहुत बार तालियों से इस कॉन्फ्रेंस के विचार को हम धन्यवाद दें।
कार्यक्रम परिवर्तन करते हुए मैं आज की हमारी विशेष अतिथि डॉक्टर विनोद खत्री जी प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज पेठानपुर भाई से अनुरोध करते हुए उनके लिए आए और उन्हें उद्बोधन दें। डॉक्टर खत्री जी। बोलिए माँ उमिया माता की आवाज आ जाए जोर से। माँ उमिया माता इतने शक्तिशाली है और आपके कहीं ना कहीं उन्हें आपका अंश है। माँ उमिया माता की। Myself, Dr. Vinod Khatri. Recently, I am principal in Government College, Indore. मेरे अपने परम आदरणीय पिता तुल्य डॉक्टर रमेश मुंडा साहब विराजमान है, इन्हें प्रणाम। ये आपके आशीर्वाद से ही विनोद खत्री इस मंच पर खड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुकाती साहब, जो कि आपकी संस्था के अध्यक्ष भी हैं, माननीय पुरुषोत्तम जी मुकाती। हम लोगों ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। सर आपके पास में पीएचडी की डिग्री है क्या आदरणीय मुकाती? कृपया जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आप इनका। 1000 पीएचडी की डिग्री अगर हम यहाँ लाकर रखते ना तो इन व्यक्ति के बराबर व्यक्ति हमारे पास नहीं है। आपका ऐसा सुंदर परिसर, आप सुसंस्कृत लोग, व्यवहारिक लोग, पूरे पाटीदार समाज की जान शान, ये आप सामने जो प्रश्निकरण बैठे हैं इन्हें मैं समर्पित करता हूँ सब। सर आज इस बात की प्रशंसा करना चाहूंगा, हमारे साथियों ने भी की कि जो पाटीदार समाज में जो एक आदर्श संस्कार व्यवहार यहाँ सभी के समक्ष हमें दिखाया है, हम मंचा से सभी अभिभूत हैं। तो बच्चों को प्यार व्यवहार दिया है, बच्चों का पालन पोषण शिक्षण जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो पूरे भारत में अनुकरणीय है। आप समझ लीजिए। मुझे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मात्र 2000 में बच्चों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। 24,000 रुपए साल में बच्चे पढ़ती हैं और इसके अलावा कोई फीस नहीं लेते। खाना पीना रहना सभी कुछ, व्यवहार संस्कार वो भी कुछ जो उनके खुद के घर में उन्हें नहीं मिलता। जिन बच्चों को वो व्यवहार और संस्कार पाटीदार समाज ने जो दिया है, इस महाविद्यालय की स्थापना करके वो बहुत ही प्रशंसनीय अनुकरणीय है। माननीय किशनलाल जी मेलोत्रा साहब, नंद किशोर जी नारोलिया साहब, महेंद्र पाटीदार जी, द्वारका प्रसाद जी मंडल और राम प्रकाश जी रामचंद्र केलोत्रा जी, मुझे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वो आपके साथी रहे उसी समय के। सबसे युवावान, ऊर्जावान, क्षमतावान वो सभी वरिष्ठ जनों को गति देने वाले, आगे बढ़ाने वाले, जिनके वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से जो आगे बढ़े हैं, माननीय युवराज जी पाटीदार कार्यकारिणी सदस्य के लिए 2 साल तालियों से स्वागत करें। ओम प्रकाश जी श्री से मुलाकात हुई थी उनसे। रामकृष्ण जी पाटीदार, मैं सर पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। रामकृष्ण जी पाटीदार माननीय रिटायर्ड मऊ कॉलेज के प्राचार्य, आपको नमन करता हूँ सर। वरिष्ठ हैं आप मेरे और इसी दिखा के आप भारत प्रोफेसर है सर। हम कहाँ लगते हैं आपके आगे? सैन्य विज्ञान में कुछ समझ ही नहीं पाता। सैन्य विज्ञान को किसी आसान समझने की बात नहीं है सर, क्योंकि आप अध्यापन अध्ययन करते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। श्रीमती इंदिरा दिनेश जी पाटीदार आपको प्रणाम करते हैं। नारी शक्ति को आपने आगे बढ़ाया, आपके समक्ष इतनी नारी शक्तियां हैं, नमन करते हैं हम। विद्यालय संचालन समिति में कपिल पाटीदार जी, ओम प्रकाश सूर्या जी, सतीश राव जी, मनोहर लाल जी पाटीदार, बाबूलाल जी भूत, घनश्याम जी चट्टीवाले, शिवनाथ सम्मान जी, शिवनारायण जी सदस्य साहब और दिलीप पंच जी सदस्य।
मैं कहाँ बड़े बड़े भाषण पर पहले इन लोगों को प्रणाम कर लो, तो नाम बोलना तो मेरे लिए जरूरी हो रहा है। विद्यालय संचालन समिति आपकी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। कहीं ना कहीं हमको डिग्रियां हासिल करके इतनी पीएचडी, इतने रिसर्च पेपर, आज को सही बात बता तो मेरी लड़की ने बोला पापा आपका एक सीवी तो बना दो। मेरे पास सीवी नहीं था या प्रेजेंट करने के लिए। अजय जी सब ने RFI वालों ने बोला सही लिख के तो दे दो, एक पेज बड़ा सुंदर सा बनता है। और मैंने कहा बनाया ही नहीं, अभी तक आज तक लिखने यहाँ तक आए। तो बड़ी बड़ी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बड़ी बड़ी चीजें लिखते जाते हैं, लोग पढ़ते हैं, हम स्पीच देते हैं तो बड़े बड़े भाषणबाजी करते जाते हैं। सर एक बात की बहुत तारीफ करना चाहूंगा, आप सभी दृष्टिगणों को। सर सभी लोग ये सामने जो शब्द लिखे हैं ये देखिए जरा, आप पढ़ लीजिए। शब्द कोटेशन आपने बिना बोले यहाँ पर लिख दिए, नई ऊर्जा का संचार होने के लिए पढ़ता रह गया। इतनी शक्ति देना हमें दादा, मन का विश्वास कमजोर ना हो। और क्या चाहिए था? योग जिंदगी और शरीर का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एक प्रश्न आप सभी से, कितनी छात्राएं योग करती हैं, कितने प्राध्यापक आपके यहाँ के योग करते बदल देंगे प्लीज, अन्यथा न है। चलिए बहुत बढ़िया है सर। मैं आपसे एक दृष्टिकोण से एक अनुमति चाहूंगा, एक बहुत बढ़िया योग का प्रोग्राम यहाँ पर कराऊंगा। आपके विद्यालय की छात्राएं रहेगी, आप सब भी रहेंगे उसमें, और योग के 10 एक्सपर्ट शिक्षक यहाँ पर खड़े रहेंगे। मैं भी रहूंगा साथ में, तो 10 एक्सपर्ट शिक्षक होंगे जो जिनके पास डिग्री नहीं है, पर वो शरीर ऐसा मोड़ के और घुमा के आपको बता देंगे कि वो पीएचडी की डिग्री रखो तो फेल हो जाएगा। वो भी नारी शक्ति आपको करके बताएंगे। जब प्रेसिडेंट बिल्कुल हम अनुमति लेंगे अध्यक्ष महोदय से, और बिल्कुल को आयोजन बिल्कुल करेंगे। क्योंकि मुद्दा जो है इनोवेटिव, जो विषय हमको दिया गया था, इनोवेशन इन मल्टीमीडिया सब्जेक्ट, आप हर लोग, सभी लोग, छात्र छात्राएं नया इनोवेशन रोज कर सकते हैं। आप रोज नया इनोवेशन कीजिए। आपका यहाँ पढ़ने वाला एक एक छात्र छात्रा, प्राध्यापक, प्रोफेसर असीम शक्तियों का स्वामी है। क्या असीम शक्तियों के स्वामी है कि नहीं? आप बताइए, है कि नहीं? जोर से बोल दीजिए आप, है ना? फिर भी आवाज नहीं है। ये बात होगी। आपकी एनसीसी छात्रों को बधाई देता हूँ मैं। सर समय तो दे रहा हूँ, माननीय अतिथियों से, रमेश मुखर्जी से, सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं 5 मिनट पर दूंगा सर अनुमति देखने में। नहीं तो सर आप जानते हैं कि यूजीसी चेयरमैन को मैंने बोल दिया था लीव देंगे, हमें मंत्री को नहीं बैठ जाऊंगा। चलिए यूजीसी चेयरमैन जो दिल्ली से आते हैं, जो हायर एजुकेशन के जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज रहती है उनको कंट्रोल करते हैं, तो मैं उनको टोक रहा था, कुछ बोलना चाहता था। तो हमारे साथ विद्वता इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ। माननीय राजीव भाई, मुझे उस कॉन्फ्रेंस में बोलने से रोका गया। 10 प्रोफेसर पकड़ने दौड़े, संजय भाई हमने है, 10 प्रोफेसर पकड़ने दौड़े कि मैं कॉलेज की बात नहीं करूं। तो इतना बड़ा पूरा मुद्दा है भारतवर्ष का, उसकी बात नहीं करो साहब, वो समस्या सामने नहीं रखो। हमारी कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी है, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, इतने सारे यूनिवर्सिटी के कुलपति ये वो सब बैठे हुए। अब मेरी बात सुन लीजिए, तक कभी कभी मौका मिलता है माइक बोल ही देता हूँ। यही सर सुन, ठीक है सर सुनिए। गवर्नमेंट कॉलेज पीतमपुर का प्रिंसिपल 3 कमरों के कॉलेज में निवास करता है, वहां पे चलता है। कितने कमरे? 3 कमरे। यहाँ घुसे तो संजय भाई और हम घुसे तो हमको देख हर तरह का देखेंगे, इतना शानदार कॉलेज, इतने शानदार एनसीसी के स्टूडेंट, इतना शानदार स्टाफ कि हम वहां एंट्री हुई उस पल पर ध्यान रखते हैं कि अतिथि देवो भव जो बात होती है वो आपने साकार कर दी कि अतिथि देवो भव। आप जानते हैं कि कैसे अतिथियों का सत्कार करना, बुलाना, उन्हें आदर से बात करना, पूरे हमारी जो बच्चियों में व्यवहार संस्कार डाले। ये पाटीदार समाज में जो ये कॉलेज खोल दिया कि उन्हीं की देन है। अध्यक्ष महोदय बधाई के बात है, पूरे ट्रस्टीगण बधाई के बात है साहब। हम पूरे इंदौर के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में उपस्थित हैं साहब, बहुत ही गर्व हो रहा है मुझे।
आपका कॉलेज पूरे इंदौर का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज, मेरे भाई बहन समाज का कॉलेज देखा, दूसरे देशों का कॉलेज देखा, वहां गए घुसते हैं कॉलेज होटल जैसा बढ़िया आलिशान पीओपी ये वो रंगीन लाइट वाइट ये वो सब, पर लड़के लड़की वहां खड़े हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। बिल्डिंग बहुत शानदार है, बच्चों में विश्वास व्यवहार और अनुशासन है ही नहीं। मुझे तो सब मजा आ गया आपके कॉलेज में। और माला आपने फैसले में हमको पहना दी। मैं जैसे ही अंदर एंटर हुआ था तो मुझे सबसे पहले अध्यक्ष महोदय दिखे, इतना सादा सीधा सरल व्यक्ति, परम आदरणीय मेरे लिए। हम कोट टाई पहन के आए बढ़िया, घर से कपड़े प्रेस होना चाहिए, प्रेस की तरह से बिगड़ना नहीं चाहिए, देखिए कैसे सिंपल में इतने बड़े में इंस्टीट्यूट को स्थापित किया। हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं, पुरुषोत्तम जी मुखाती अपने आप में इंस्टीट्यूट है साहब, ये संस्थान है अपने आप में, पूरा एक व्यक्ति संस्थान है साहब। मैं बेटे बेटे पूरे समय इनसे बातचीत करता रहा, मैं उनसे बात करते रहे, आत्मा और भावना का मिलन हो गया हमारा। एक बेटा पिता से बात कर रहा था, इतनी देर में बेटा सीख रहा था सब संस्कार व्यवहार, फिर मुझे लगा कि मैं तो इतनी वो पाँव के नाखून के बराबर नहीं, मैंने तो कॉलेज खोला ही नहीं, खाली डिग्री हासिल की और करता है। हमारे यहाँ जो शिक्षक आप बैठे हैं, ट्रस्टीगण जो बैठे हैं, और जो मैडम आपकी प्रिंसिपल है, पूरा स्टाफ, आपको इंडस्ट्री नहीं चला रहे, कोई धंधा नहीं कर रहे हैं। फिर मैं आपको कॉलेज का कंपैरिजन बताता हूँ। क्लास मार्केट कॉलेज, क्लास मार्केट का नाम सुना? क्लास मार्केट मतलब कपड़े के व्यापारी, मार्केट में कपड़ा बेचने वाले कपड़े के व्यापारी। तो भाई जब उन्होंने कॉलेज खोला, बढ़िया आलिशान कॉलेज, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, बढ़िया कॉलेज। कपड़ा बेचने वाले शिक्षा का धंधा करने लग गए। बात बताइए ये नहीं है सर? टॉपिक से थोड़ा सा हो गया क्यों, बस आ गया, ठीक। हम कभी बात करेंगे आराम से, मैं आऊंगा फिर, जितने छात्र छात्राएं बात करेंगे, थोड़ी सी बातों के साथ अपनी बात बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं। आप जितनी छात्राएं बैठी हैं, असीम शक्तियों के स्वामी माँ उमिया के कैंपस में आप बैठती हैं, किसी से डरे नहीं, घबराए नहीं, कॉन्फिडेंस रखें पूरा। नहीं तो मैं एक लड़की आपको भीतर में काली से लाके बता दूंगा जो एक हजार को आपको संबोधित कर देगी, गांव की लड़की वैसी। ठीक है, हम सभी इन चीजों को देखेंगे, करेंगे आगे, और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ आपके प्यार व्यवहार के लिए। और आप नया इनोवेशन लॉन्च करें, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था, बढ़िया से बढ़िया आप काम करें, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो भी चीजें सीखना चाहते हैं, हम कभी फिर आएंगे। आयोजन मंच नहीं होगा, आप होंगे और हम होंगे। धन्यवाद। एक हमारे प्रोफेसर साथी है राजीव शर्मा, मेरे बड़े भाई, जहां जाते हैं आग लगा देते हैं, प्यार बरसा देते हैं। कभी आप सुनिएगा उन्हें, अंतरराष्ट्रीय कवि महोदय, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। बहुत धन्यवाद, आपने जो प्रशंसा हमारी की उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि पूरा स्टाफ, ट्रस्ट और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ बीते कई दशकों से इसी प्रयास में लगा हुआ है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आपके महाविद्यालय के छात्रा 1000 लोगों को संबोधित कर सकती है, बहुत एप्रिशिएशन की बात है। हम भी आपसे साझा करना चाहते हैं कि इस वक्त जब भी हम यहाँ बैठे हैं, हमारी एक छात्रा भारत के 130 करोड़ पब्लिक को संबोधित करने जा रही है। शब्दों से नहीं, किंतु कर्तव्य पथ पर चलकर। तो हमारी एक एनसीसी की छात्रा इस वक्त तैयारी कर रही है कि 26 जनवरी को जब वो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के सामने चले, तो न केवल मियां भारत का, न केवल मध्य प्रदेश का, किंतु हमारी स्कूल विचार का कि महिलाएं भी आगे आके कुछ कर सकती है। तो ये इनोवेशन
जो शुरुआत वो है उसके सामर्थ्य को प्रस्तुत करने के लिए हमारी वो छात्रा हमारा गौरव बढ़ा रही है। तो उस छात्रा के लिए भी मैं अनुरोध करूंगी पूरे सदस्य से जोरदार तालियां हैं। मैं आज की हमारे चीफ पेट्रॉन डॉक्टर रमेश मंगल जी, a senior educationist of India, I will request sir, so please come and grace us with your blessing words. Dr. Ramesh Mangal ji. वैसे तो कई कार्यक्रमों में जाना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रामीण अंचल के इस माता उमिया के धाम दरबार में आयोजित इनोवेशन इन मल्टीडिसिप्लिनरी एरिया, not only in commerce, it is in the field of the commerce, management, science, engineering, medical, education, information technology, humanity, life, ये तो वास्तव में विकार की बात है कि एक कॉलेज, एक ग्रामीण अंचल का कॉलेज इतने विधाओं को लेकर एक मल्टीमीडिया सेमिनार कर रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो निश्चित रूप से यह जो अमृत वर्षा होगी, ये अमृत काम होगा, यह अपने आप में बहुत उल्लेखनीय होगा। मैं बहुत बधाई देता हूँ पुरुषोत्तम जी मुखाती से, मैं आज मुखाती हुआ और वास्तव में इतना सादा जीवन उच्च विचार के साथ में 36 ट्रस्टी, अभी मुझे बताया 36 ट्रस्टी, तो मैं थोड़ा सोचने लगे 36 तो 36 तो उल्टा उल्टा होगा लोगों के दिमाग में, लेकिन ये 36 तो 63 हो गया। इन्होंने पाटीदार समाज में जो प्रगति की, खेती में उन्नति, परिवार में उन्नति, देश की उन्नति, उसके साथ शिक्षा में, खत्री जी सही बोले, वास्तव में जितना पाटीदार समाज संपन्न है, उसी रूप में यह कॉलेज भी, यह विद्यालय भी उतना ही संपन्न है। मैं यहाँ के शिक्षक, प्राचार्य और सभी इन प्यारे अनुशासित विद्यार्थियों को प्रणाम करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, एक बहुत अच्छा आयोजन आज यहाँ किया है। सौरभ यहाँ बैठे हैं, मेरे भाई छोटे भाई कन्हैया आबूजा का एक बड़ा ज्ञानवर्धक लेक्चर हमने सुना है। वास्तव में इस प्रकार के रिसर्च ओरिएंटेड से इसी प्रकार के लेक्चर की आवश्यकता थी। सौरभ जी ने अपनी बात कही, विनोद जी ने विनोदपूर्ण बात कही, अच्छा लगा। और मैं कुछ अधिक नहीं बोलना है क्योंकि टाइम बड़ा मार्जिन दिखा रहा है। मैं थोड़ा स्मृति की बात करूंगा। आपके यहाँ पर हरे भैया थे, अभी बहुत जल्दी चले गए, लेकिन मुझे उनकी याद करके भावना आ जाती है कि जब मैं इस कॉलेज में पहली बार आया तो सफाई करवा रहे। इस कॉलेज की संरचना में, इस स्कूल की संरचना में हरि भैया, घनश्याम भाई, चतुर्भुज जी पाटीदार और भी जो मनस्वी नहीं रहे हैं, उनका बड़ा योगदान है। मैं उनको नमन भी करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। अधिक नहीं बोलता है, मैं केवल एक बात छोटी सी कहूंगा। सौरभ जी ने भी कहा
रिसर्च कहा जा रहा है। आहूजा जी ने भी कहा, वास्तव में गूगल के आने के बाद रिसर्च आसान हो गया है, लेकिन गूगल सब कुछ नहीं है। गूगल दिशा देने वाला एक क्षेत्र है, कैसा आपको तय करना पड़ेगा। अभी मैं मेरे मित्र और अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व राजीव जी से बात कर रहा हूं। वास्तव में रिसर्च ऐसी नहीं हो कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंभा किया, वो रिसर्च बनी। अभी हमारी यूजीसी ने बहुत अधिक नई नई बातें कही है, नए काम करने की बात कही है। कि जो मेरे अनुशासित विद्यार्थी और आज जो है पेपर प्रस्तुत करने वाले हैं, मैं उनको यह कहूंगा कि आप भाग्यशाली नहीं है, साधन मिल रहे हैं आपको, लेकिन साधना की जरूरत है। और साधन गूगल, साधन का उपयोग जब तक सही नहीं होगा तब तक साधना नहीं। रिसर्च ओरिएंटेड बने और हौसला बनाकर रखें। बात को खत्म करना चाहूंगा एक ही बात के साथ, सपने देखिए, सपने देखने के बाद जुनून लाइए, जुनून लाने के बाद उड़ान भरिए। अगर हो जुनून आप में, अगर हो जुनून आप में, सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान। मैं समझता हूं हमारे जो मित्र आज बैठे हैं, वे आज रिसर्च की गंगा में हौसला लेकर आए हैं। बहुत अमृत निकलेगा। वे पाटीदार समाज के अध्यक्ष और यहाँ के कर्मठ प्राचार्य अनुपमा झादेव जी को नमस्कार देता हूँ, सभी ट्रस्टी को भी नमन करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि आज का यह सम्मेलन, क्योंकि इंदौर में इस प्रकार के विषय का सम्मेलन के सेमिनार कम आपने किया है, इसकी बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि मुस्कुरा के जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी जवानी चाहिए, ये पूरी दुनिया आपकी हो सकती है, केवल माँ सरस्वती की मेहरबानी चाहिए। ऐसी एक मेहरबानी माँ सरस्वती की हमारी अगले वक्ता के पास भी है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर राजीव शर्मा जी को, प्रोफेसर नेचुरली जर्नलिज्म डिपार्टमेंट GHCC इंदौर। डॉक्टर राजीव शर्मा जी। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय रमेश मंगल सर, आदरणीय कन्हैया सर, अजय भाई, सौरभ भाई, मुकाटी जी, आचार्य महोदय, भाई, मैडम युवराज भाई, महेंद्र भैया उपस्थित देवियों सचिव। अभी डॉक्टर रमेश मंगल सर ने कहा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। कुमार बाराबंकी की शायरी को आगे बढ़ाते हुए APJ कलाम साहब ने कहा था कि सपने वे नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने तो वे होते हैं जो नींद आने ही नहीं देते। उन्होंने कहा परिवर्तन का युग है,
फिर मैं आपको डॉक्टर एपीजे कलाम की पुस्तक विंग्स ऑफ फायर की तरफ ले जाना चाहूंगा। जो रिसर्च का मामला है, और रिसर्च का अर्थ वो होता है जो सर्च किया गया उसमें से कोई नई बात खोजना। रिसर्च कैसे होता है? हरिवंश राय बच्चन जिस समय विद्यार्थी थे उस समय ताजमहल को लेकर एक विश्व स्तर की निबंध स्पर्धा हुई। कहा है कि 5000 शब्दों में ताजमहल को लेकर आपको अपनी बात लिखनी है। जो विजेता होगा उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। सबने उस स्पर्धा में भाग लिया। जो लिखना चाहते थे, लिखना जानते थे, हरिवंश राय बच्चन विद्यार्थी थे, उन्होंने भी निबंध स्पर्धा में भाग लिया। उन्होंने 5000 शब्द नहीं लिखे, केवल 2 पंक्तियां लिखी, और 5000 शब्दों में लिखे हुए 25,000 से ज्यादा निबंधों को परास्त करते हुए वो 2 पंक्तियों के निबंध को सर्वश्रेष्ठ निबंध होने का पुरस्कार मिला। ये होती है रिसर्च। और वो 2 पंक्तियां ये थी, जो वो 2 पंक्तियां थी कि ताजमहल और कुछ नहीं है, शाहजहां के आंसू हैं जो मुमताज की याद में जम गए, और फर्स्ट प्राइज मिल। तो रिसर्च ऐसा होता है। आदरणीय प्राचार्य खत्री साहब, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। आदरणीय कन्या जी बोल रहे थे कि परिवर्तन चाहिए पर एपीजे कलाम विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं कि ये धरती 5000 सालों में उतनी नहीं बदली जितनी पिछले 500 सालों में बदल गई। ये धरती पिछले 500 सालों में उतनी नहीं बदली जितनी पिछले 50 सालों में बदल गई, और ये धरती पिछले 50 सालों में उतनी नहीं बदली जितने पिछले 5 सालों में बदल गई। आगे एपीजे कलाम विंग्स ऑफ फायर लिखते हैं कि आने वाले समय में ये धरती हर वर्ष उतनी तेजी से बदलेगी जितनी 500 साल में पहले नहीं बदली है। परिवर्तन के उस दौर में हम रह रहे हैं। हम परिवर्तन के उस दौर में रह रहे हैं जहां आदरणीय कन्या सर ने कहा कि टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो हुआ है, इसने हमारी सोच को बदल दिया, हमारे संस्कारों को बदल दिया, हमारी संस्कृति को बदल दिया। हम उस टेक्नोलॉजी के युग में आ गए हैं। यहाँ पर बैठी हुई मेरी बेटियां और कुछ बेटे जैसे विद्यार्थी हैं। बेटा, मैं तुम्हारी तरफ उन्मुख होना चाहता हूँ। तो हम उस युग में आ गए हैं जहाँ फेसबुक पर तो हमारे 5,000 10,000 मित्र, मेरे ही 25,000 मित्र हैं। और पिछले वर्ष कोरोना में जब मैं बीमार पड़ा तो 25,000 फेसबुक के मित्रों में से फेसबुक पे एक मित्र सामने नहीं आया। हम उस युग में आ गए हैं। हम उस युग में आ गए हैं जहाँ हमें गाय पालने में शर्म आती है और कुत्ता पालने पर गौरव की अनुभूति होती है। हम उस युग में आ गए हैं जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत चालाक कर दिया है। हमें इतना चालाक कर दिया है खुद के प्रति, परिवार के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति। जब हम मंदिर में भी जाते हैं ना, तो जूते ऐसी जगह जाकर छोड़ते हैं जहाँ से भगवान और जूते दोनों एक साथ दिखे, क्योंकि हमारे मन के अंदर ये विश्वास है कि भगवान को हमें कल भी मिल जाएगा, लेकिन निगाह चूक गई तो जूते अभी हाल गायब हो जाएंगे। भगवान भी कहते हैं जा बेटा, जूते ही खा, तो आदमी जूते ही खाना है, वो दमन के जूते खा रहा है, शोषण के जूते खा रहा है, अन्याय के जूते खा रहा है, अत्याचार के जूते खा रहा है, भ्रष्टाचार के जूते खा रहा है। हम उस युग में आ गए हैं। हम उस युग में आ गए। ये टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। मेरे छोटे भाई भैया आप कहते हैं, हम उस युग में आ गए हैं कि पहले कहते थे सर अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सत्य श्यामल भारत भूमि में दूध और दही की नदियां बहा करती थी, ऐसा कहते थे सर। हम उस युग में आ गए। दूध और दही की नदियां तो छोड़ो, 1 लीटर बिस्लेरी का पानी 21 रुपए में मिल रहा है रेलवे स्टेशन पर। हम उस युग में हैं। मैं सच्चाई रखना चाहता हूँ। मैं आज से 40 वर्ष पहले जब राहुल में रहने आया था तो ये युवराज भैया के साथ एचआईवी कॉलोनी जाया करता, जिस कॉलोनी में आजकल मैं रहता हूँ। आपकी प्रसन्नता इस बात पर होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव देखिए सर। अतिथि देवो भव की बात भी मंच पर आदरणीय खत्री साहब ने कही। 40 साल पहले जब एचआईवी के घरों को देखने जाता था मैं, तो ज्यादातर घरों के बाहर लिखा रहता था अतिथि देवो भव। 40 साल पहले, 30 साल पहले कब से इंदौर रहने चले गए। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वो अतिथि देवो भव की जो इबारत थी वो मिट गई,
क्योंकि अतिथि देवो भव का अर्थ है कि हमारे यहाँ जो भी आ रहा है वो हमारा परमात्मा, लेकिन वो इबारत मिट गई, उसकी जगह हमने इबारत की सुस्वागतम, यानी जो हमारे यहाँ आ रहा है उसका केवल स्वागत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अगले 10 वर्ष बाद यानी 20 वर्ष पहले वो अतिथि देवो भव और सुस्वागतम भी चले गए, उसकी जगह दरवाजे के एक कोने पर लिखने लगे लाभ, दूसरे कोने पर लिखने लगे शुभ, यानी यदि तेरे आने से कोई लाभ हो तो ही तेरा आना शुभ है, भैया वरना तो आई मत। ये परिभाषा हो गई। और 10 साल पहले के अतिथि देवो भव सुस्वागतम लाभ शुभ सब मिट गया। अब एचआईवी के हर घर के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। ये यथार्थ बता रहा हूं, ये केवल हमारे घर के दरवाजों पर लिखी हुई इबारत का पतन नहीं है, ये इस टेक्नोलॉजी के युग में हमारे संस्कारों का पतन है, हमारी संस्कृति का पतन है, हमारे सोच का पतन है। और इस पतन को दूर करने के लिए यदि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद होना चाहिए कि हमारी सोच को सकारात्मक करें। जब तक हमारी सोच सकारात्मक नहीं होगी तब तक हम टेक्नोलॉजी के या इकोनॉमिक्स के या ह्यूमैनिटीज जैसा विषय यहाँ पर रखा है, मानवीय व्यवहारों के परिवर्तन को लेकर ह्यूमैनिटी में हम पढ़ते हैं। और उस परिवर्तन को जब तक हम सकारात्मक दिशा नहीं देंगे तब तक जीवन में हमें सफलता नहीं मिल सकती, तब तक ज्यादा उत्पादकता रिसर्च भी नहीं हो सकती। और सकारात्मकता के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम बड़ा कठोर परिश्रम करें, उससे कुछ नहीं होता कठोर परिश्रम करने से। यहाँ पर ये जो विद्यार्थी बेटा मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी से यदि एक शिला मुड़ के, एक चट्टान मुड़ के और वो लुढ़कते पश्चिम में चली जाए तो उनका पश्चिम में वो रेगिस्तान है, वो चट्टान वहां जाकर अनउर्वरक लेक बन जाती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन वही वाली चट्टान माउंट एवरेस्ट से जुड़ते और लुढ़कते पूरब में आ जाए तो पूरब में इस देश की, भारतवर्ष की गंगा नदी बहती है, वो चट्टान गंगा नदी में गिरेगी। गंगा नदी के प्रवाह के साथ वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वो लगातार बहती रहती है, तो वो चट्टान शालिग्राम का रूप धारण कर लेती है, वो चट्टान पूजनीय हो जाती है, वो चट्टान शिव के रूप में मेहनत को भैया चट्टान ने बराबर, मेहनत तो बद्री साहब चट्टान ने बराबर की ना, लेकिन उसकी दिशा गलत थी तो वो अनप्रक हो गई, और उसकी दिशा सही थी तो वो पूजनीय हो गई, आदरणीय हो गई, वंदनीय हो गई। इसलिए जो लोग आपको कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस, वो आपको अधूरा सत्य बताते हैं। पूरा सत्य ये है कि हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन इज की ऑफ सक्सेस। तो ये रिसर्च जो है राइट डायरेक्शन की तरफ जाता है तो वो पूजनीय होगा, तो वो वंदनीय होगा, तो वो अभिनंदनीय होगा। और ये रंगवासा रहूं युवराज भैया आपने मुझे जो पत्र दिया उसमें लिखा है मां उमिया कन्या महाविद्यालय रंगवासा रहूं। इसका मतलब ये है कि ये जगह जो है ये राउंड और रंगवासा के बीच में है, इसका अर्थ ये हुआ। और रंगवासा किसे कहते हैं बेटा? रंगवासा का अर्थ कहते हैं कि ये होता है कि जहाँ के वासी रंगीन हो, अपने रंग में रहते हो, वो रंगवासा। और राउ क्या? वो स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में राउ शब्द का प्रयोग 16 बार किया है। राउ का अर्थ होता है राजा, तो राउ रंगवासा का अर्थ होता है कि जहाँ के लोगों की तबीयत ऐसे राजा की तरह हो, जहाँ सारे रंग आकर निवास करते हो, वो है राउ रंगवासा। इसलिए हम राउ रंगवासा के बारे में कह सकते हैं कि यहाँ ज्ञान की महिमा। अब चूंकि कवि हूँ तो कवि वाली बात विचार हो जाए, होता है ना कि यहाँ ज्ञान की महिमा दशकों से गाई जाती है। युवराज भाई 1980 में अपन ने यहाँ पर जब ये उमिया न्याय थी बेटा, जिसमें साहब भिक्षु घुमा करते थे, आदरणीय पुरुषोत्तम मुखर्जी साहब, तब आप भी थे दादा, युवराज जी के पाटीदार से भाई थे, दयाशंकर भाई थे, जरूरलाल जी पाटीदार वहां से आए थे। उस समय 1978 में एक एक्टिविटी कहाँ तक मुझे ध्यान देना, गलत तो नहीं हूँ पुरुषोत्तम दादा, 78 की बात बता रहा हूँ बेटा मैं। तब यहाँ पर मैं भी विद्यार्थी था, हम लोग यहाँ पूजा अर्चना की हमने, और तब से ये ज्ञान की अलग चल रही है। ये ज्ञान की अलग है, ये जो साकार स्वरूप यहाँ पर हुआ है, ये
1977 में वो जनता पार्टी के समय मुबारक देसाई प्रधानमंत्री बने थे और जवाहरलाल फर्नांडीज उद्योग मंत्री थे और जगजीवन राम देश के गृह मंत्री। तो उस समय दादा हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी थी, तो यहाँ पर ज्ञान की अलग तो तब से जग रही ना बेटा, तो यहाँ ज्ञान की अलग दशकों से गाई जाती है। मालव माटी की चहक महक कण में पाई जाती है और माँ उमिया को नमन कर पूरी होती सबकी आशा है। और बेटा अगली पंक्ति यदि आपके दिल के दरवाजे की सांकल को प्रसन्नता पूर्वक खनका दे तो ये सारा का सारा सदन यहाँ पर जो उपस्थित है ना, विधिवत इस रिसर्च फाउंडेशन की अजय भाई और सौरभ भाई की मेहनत को जो साकार करने के प्रयास आचार्य मैडम कर रही है, इनके सम्मान में बेटा जब तक मैं कुर्सी पर नहीं जाऊं तब तक 30 सेकंड तक हाथ उठाकर तालियां बजाना, ताकि मुझे लग जाए कि मैंने तो बात कही तो आप तक पहुंची बेटा, कि यहाँ ज्ञान की महिमा दशकों से गाई जाती है। मालव माटी की चहक महक कण कण में पाई जाती है। माँ उमिया को नमन कर फलित होती सबकी आशा है और प्रेम सहित गौरव से बोलो ये अपना रंगवासा है। बस्ती रह जाएगी क्योंकि हमारे बीच में ऐसे कभी और हमारे बीच में ऐसे ज्ञान की उपस्थित है। और इस बारे में हम राजू सर की दो पंक्तियां को नहीं कुछ वर्ड में से जोड़ना चाहेंगे। शायद हम पहले के समय की बात करें तो हमारे बीच में चरक, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कनट, बारहमीरा, नागार्जुन, इन्होंने क्या अपने देश में रहकर, भारतवर्ष में रहकर क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, क्या क्या साइंस की अगेंस्ट में, क्या क्या साइंस के फेवर में, तो आज से 500 और 700 साल पहले काम कर चुके हैं। और मैं बात करूंगी चाइना, जापान, इंग्लैंड ने वही ग्रंथ उठाकर, मैं रामायण की बात करूं, उसी ग्रंथ में से उठाकर उनको अपने नाम पर पेटेंट कराकर बता रहे हैं कि वो चीज किसके द्वारा इन्वेंटेड है। तो इसके लिए सर 2024 में राजू सर 2024 में हमने ये टीवी में भी डिक्लेयर किया था कि इस पेपर पर जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे, चरक, भास्कराचार्य, कनट, बारहमीरा, इनके लेवल पर उन्होंने जो रिसर्च किया है उसके लिए हम एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, शायद बच्चों की बहुत ही उपलब्धि बाकी बात होगी, शायद वो नहीं जानते होंगे कि आज से 500-700 साल पहले क्या क्या रिसर्च हुए हैं, उसके लिए हम आयोजित करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे राष्ट्रीय जनरल डॉक्टर अजय जैन जी उसको पूरा कार्यान्वित कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजेश सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ भी बोलने नहीं आया हूं। मैं राजू भाई ध्यान दीजिए, मैं राजू भाई को व्हाट्सएप से देख देख के बहुत बड़ा हुआ था और मेरे से हम एक 8-9 साल के साथ में रहे हैं, तो थोड़ा सा कार्यक्रम में मैंने परिवर्तन कराया और मुझे डर लगा कि सबसे पहले मैं बोलूं, नहीं तो राजू भाई के बाद मुझे कोई सुनेगा नहीं। कृपया जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। तो राजू भाई के शब्दों के जादू पर आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे बीच में छोटे शब्दों की जादूगर और भी उपस्थित हो चुके हैं। श्याम सुंदर जी करोड़ आपका स्वागत करते हैं सर, आइए। आदरणीय प्रोफेसर से निवेदन करता हूं कि वो दायरे में पधारे। अवस्थी सर और डॉक्टर मणिपुरा सर भी उनके साथ पधारे। पधारे सर, करोड़ सर, दुबे सर और अवस्थी सर। अब जब हमारे अतिथि मंच पर आ जाए उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों के साथ एकेडमिक्स में, शिक्षा में, समाज में अपने अलग अलग योगदान के कारण रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया 2022 से कुछ अवार्ड की घोषणा यहाँ से की जा रही है। मूलतः 5 अवार्ड यहाँ से दिए जाते हैं, जिनमें
से एक डॉक्टर श्री प्रोफेशनली जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, तो यहाँ उपस्थित नहीं है, तो उनका ऑनलाइन अवार्ड सेरेमनी यहाँ से प्रस्तुत की जा रही है। उसके साथ ही डॉक्टर निवृत्ति दुबे, उनको भी RFI द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है। साथ ही मिस अनुपम तिवारी जी को भी अवार्ड दिया जा रहा है। क्योंकि ये तीनों यहाँ उपस्थित नहीं है, इसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस अवार्ड सेरेमनी में अगला नाम है डॉक्टर नेहा चौरसिया जी। She is Dean Department Commerce, Dr. APJ Abdul Kalam University, Indore. She is being given award for achievement of excellence in the field of commerce. I would request Dr. Neha Chausa, madam, so please come forward to receive your award. इसके उपरांत इनोवेटिव डेडिकेटेड टीचिंग प्रोफेशनल अवार्ड दिया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स गवर्नमेंट कॉलेज बिहार के डॉक्टर संजय प्रसाद जी को। डॉक्टर संजय प्रसाद जी। Dr. Prasad has been awarded with 2 different awards, one from MP state government and second from Higher Education Madhya Pradesh. Dr. Sanjay Prasad ji. ये आपने जिस शख्स को देखा है संजय प्रसाद जी, अनेक विधाओं में पारंगत, मंच में अच्छे संचालक, कोई भी आयोजन कराना हो तो बिल्कुल उसका सेटअप बहुत अच्छे तरीके से जमा देते हैं। तो मैं जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और मेरे बहुत ही अच्छे सहयोगी हैं और मेरे साथ भी कार्यरत हैं सहायक प्राध्यापक के पद पर। धन्यवाद। बार बार मन में बात रही थी कि इतना अच्छा संचालन, सभी बातों को सम्मिलित करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी संचालिका इतनी स्मार्ट है कि एकदम जवाब देती बातों का। मैंने 1000 बोला कि 1000 लड़कियों को समझ बोले 1,30,00,000 गाँव से फिर से करेक्शन 130 करोड़। बहुत बढ़िया। इस स्वतंत्रता के लिए क्षमा चाहूंगी। So RFI कौशल्या कन्या महाविद्यालय डॉक्टर संजय प्रसाद जी और डॉक्टर नेहा चौरसिया जी को पुनः बधाई देता है। इसके उपरांत मैं मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध करती कि अभी कुछ कार्यक्रम ऑनलाइन व्याख्यान के रूप में है, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया कर मंच के नीचे स्थान ग्रहण करें। बेटे कुर्सियाँ कुर्सियाँ हटवा लो या अच्छा उन्हें छोड़ने आपसे परिचय ना सबसे
सर्टिफिकेट इस ड्यूटी गवर्नमेंट हम ऑनलाइन व्याख्यान की श्रेणी में सबसे पहले आपको कुछ क्रम है तो आप सभी से अनुरोध है कृपया करके अपना स्थान बनाए रखें। अतिथियों को किसी वजह से यहाँ उपस्थित नहीं है किंतु सभा में उपस्थित सभी छात्राओं और स्टाफ सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया करके अपना स्थान बनाए रखें। अगले कुछ व्याख्यान ऑनलाइन होने वाले हैं। So we have Alicia Ivan, Professor, Northern University, Armenia. So before I start, I would like to listen from you, ma'am. Are you able to hear us? Yes. We are waiting for you to come, madam. I would request Alicia Ivan, madam, please reply. Are you able to hear us? I would request technical team to please take the matter. इनको अनम्यूट कर दे कैसे? Madam Umiya, I would request you. उनने वहाँ से इसको दी इनको डीपन कर दो, इनको डीपन। ये सब वो ये अनम्यूटिंग ये है ना वहाँ से उनने करा तो चालू नहीं, उनको आवाज नहीं जा रही। उनको नहीं है। नेक्स्ट फोन लगा दो। वो वहाँ से जब इनेबल करेंगे अपनी आवाज आ रही है। ओके। Hello, Dr. Evianan. Is it audible? हाँ उनको ही जाना है ना। वो उनके वहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट Sir, hi sir, have you mentioned Ivania? Yes, sir. Welcome, Miss Evian. Please welcome. Yes, hi. Good afternoon, madam. Is it my time? Yes, ma'am. You are audible. So good afternoon from the panel here from India. Very good afternoon to everyone. First of all, let me express my immense pleasure to Dr. Raja Jain and all of you for invitation in International Conference on Innovation in Multidisciplinary Areas in the field of commerce, management, science, engineering, medical education, information technology, humanities, law, and agriculture. My name is Arusya Kibanyan. I represent Armenia. I am an English lecturer, currently head of international relations at Northern University of Armenia. It has been already 5 and 6 years I am doing research in the field of linguistics, specifically business English, which is combination of English and business. I took part in a lot of conferences and understood that multidisciplinary approach gives me more opportunities to comprehend my topic deeper. So far, these type of conferences are benefiting to extend the understanding of multidisciplinary research. As I am given 5 minutes to speak, I will briefly introduce my perception about multidisciplinary research. Multidisciplinary research brings disciplines and researchers together to talk about issues from each of their own perspective.
The people involved collaborate but maintain a separation of their disciplines in the process. When the project is over, the people return and may start other projects depending on the success of the previous one. When experts from different fields and countries work together within the boundaries of their own discipline, they are set to adopt a multidisciplinary approach. A transdisciplinary team is an interdisciplinary team whose members have developed sufficient trust and mutual confidence to transcend disciplinary boundaries and adopt a more holistic approach. Multi and interdisciplinary research are often used interchangeably, but originally they referred to different approaches. When experts from different fields work together on a common subject within the boundaries of their own discipline, they are set to adopt a multidisciplinary approach. However, if they stick to these boundaries, they may reach a point where the project cannot progress any further. They will then have to bring themselves to the fringes of their own fields to form new concepts and ideas and create a whole new interdisciplinary field. A transdisciplinary team is an interdisciplinary team whose members have developed sufficient trust and mutual confidence to transcend disciplinary boundaries and adopt a more holistic approach. This involves drawing appropriately from several disciplines to enable scholars redefine problems outside normal boundaries and arrive at solutions based on a new understanding of complex situations. This is the current trend widely advocated by experts in different disciplines. Multidisciplinary research has a lot of benefits, but we would like to mention some of them. A team of researchers will more effectively solve a problem than if they worked independently. It makes researchers to think outside the box, which may be important in solving a problem or questions. Most problems are multifaceted and require a range of expertise to properly investigate and potentially solve the problems. Of course, multidisciplinary research needs to encourage knowledge sharing among researchers and to appropriately address the needs of organizations that sponsor such research. In conclusion, in today's world, human beings are grappling with a wide range of problems and possibilities which result from increasing complexity. To solve the complex problems and release the possibilities of technological advances requires coordinated collaborative scientific endeavors that cut across multiple disciplines. Multidisciplinary research therefore holds great promise for yielding greater scientific advances in understanding and improving human performance. It should be the way for scientific productions in our higher institutions of learning. Thank you so much for your attention. Yes, indeed, innovation plays a great role in the scientific careers of students and as well as faculty. Thank you. I would like to request Dr. Inga Khachiva from Georgia. Dr. Inga Khachiva from Georgia. Hello, everybody. Namaste, India. Can you hear me? Namaste from India as well, ma'am. Can you hear me? Hello, can you hear me? Ma'am, yes, but Yes, thank you. My presentation is visible? Yes, it is visible, ma'am. Yes, thank you. Thank you so much. Warm greetings from Georgia. I'm Inga Kachilava. I'm very happy today. Thank you very much for this invitation. It is really a great honor for me. Many thanks to organizers team. Congratulate this really amazing conference. Congratulate all the speakers and of course greetings to the guests. Today is an important day. I see an important international conference. Wow, thank you. Okay, today I will talk about one of the important issues, inclusive education.
Inclusion is an English word that means involvement in Georgia. Inclusive education involves the inclusion of a student with special educational needs in the general education process with peers. The right to education of students with special education needs is mentioned in various international documents, as well as in the law of Georgia on general education. Problems related to inclusive education are often the subject of discussion both in the population and in the academic field. Such urgency of the issue pushes us to thoroughly analyze the challenges that inclusive education faces today. Also, think about the prospects for such education in the modern, rapidly changing world. Research has shown that inclusive education is generally perceived as a positive, but a small proportion of parents of students with special education needs think that the learning environment as a whole provides an overall environment for the students. Unlike the parents of healthy students, a fairly high concept of them think so. My dear colleagues, all children have the right to receive an education. Therefore, they should be given the opportunity to attain a certain level of education. Every child has unique personality traits, interests, and skills. Accordingly, the education system should arrange it should arrange the education programs take into account the slight difference between individuals. You know, people with special education needs have to right to attend public schools where pedagogy is focused on the students and takes into account his or her needs. It is well known in the psychological sciences that every human being is born with certain genetic data. A lot of the social international plays a big role in human development along with data predisposition. Okay. The goal of inclusive education is to create the environment where children can realize their full potential. Inclusive education has become one of the priority areas. Step by step, not only the approach are changing, but also the attitude of the society towards people with disabilities. I repeat again, my dear friends, once and for all that every child has the right to education. It is written now in the Constitution of my country, Georgia, as well as in the Declaration of the Rights of the Children. Okay, science to inclusive education has been introduced in schools, and science 2030 inclusive education has been introduced also as a level of vocational education is very important. The effective tax taken by the state over the rise have been successfully reflected in a practice. For a country like Georgia, where people with disabilities were children who did not have the right to speak in a
public. The third situation is favorable, but not specific. It's very important. Okay, as for the general condition of hopefully inclusive education is provided all schools today if there is a need for it. Today the students is related between them at the beginning of this process. Interdisciplinary course with special education needs. You know, special teachers also tutor, also a social worker, also one. Okay, the attitude of the society is gradually changing, but even today we can hear yes from the teacher. I have an institution. I teach disability. I have a class of children in the class. Oh my God! Of course, this is not good words. The attitudes of teachers and parents toward people with disabilities determine the attitude of children towards the help and limitation. There is a lot of work to be done and for to be on this issue. Human resources, particularly, is access to number of opportunities are also a problem. And one of the fundamental challenges concerns the competence of teachers. Although trainings have been actively conducted in the last few years, improve the skills of teachers to rise their qualification to work as teachers. Only certified good teachers can do so. We cannot say that the overall level of teachers is satisfactory. Okay, as for the future perspective of inclusive education, it is necessary to know that its development is not hindered and stopped in one place. One proper work on all of the challenges is the essential for the successfully implementation of inclusive education practice. It is necessary for the monitoring and the evaluation to function properly to set legal framework to adapt the health environment. All this will with all of this joint work of ministries, parents, teachers, parents on the also psychological and social. Okay, the modern world where the different values is equality, tolerance, and respect for the uniqueness of each. The model of inclusive education is offering as it is based on moral and ethical principles to a democratic society, which enables all people to feel life, to play and to live an active life. Yes, my dear friends, my dear colleagues, thank you very much for listening to me. This topic is very important for me. And as a teacher, I have a great responsibility. I work in schools as well as also college, and it is probably advised how many students I interact with on a daily basis. I want to be a source of motivation for every student and their
friend. I want to light the way for a bright future. Thank you so much, all, especially to all of you. Warm greetings from Georgia again. Thank you so much, madam. Very well said. All the students, those who are born with spatial challenges, they are also have the right to be in history. That is why in India we call them not as a disabled child, but we call them spatial child. Thank you so much. Having you, madam. Thank you so much. So, after that, we will be requesting Rania Lampu Madam from Greece. She is a global educator, STEM instructor, Greek, Ministry of Education and Religious Affairs, Greek Astronomy and Space Company. So, this college, SUPN, is situated in center of India, along with Research Foundation of India. They both welcome you, madam. Over to you. Greetings from Greece. Very, very honored to be invited to this great conference. I would like to congratulate all organizers, especially Research Foundation of India and Dr. Ajay Jain for the kind invitation. Today, we will explore the concept of sustainability, environmental education, education for sustainable development and awareness, and how all this can be combined with STEM education, science, technology, and mathematics, in order to serve the goal of global citizenship. So may I share my presentation? Is it visible now? Yes, they are visible. Okay. So the 2030 agenda considers education as a key strategy. Key strategy to accomplish important environmental goals. Education must answer the environmental issues, defining new relevant objectives and contents, new global frameworks and specific teaching programs to empower people, students. So from this point of view, educational institutions have to establish new programs to create an essential context to integrate sustainable development goals. So when we talk about sustainable development education contributes to developing competencies in sustainability among students, such as critical and creative thinking, problem-solving strategies, capacity to act, collaboration, systemic thinking. So these students, of course, will be potential change actors with the ability to shape a more sustainable society. So sustainability is actually ensures that future generations have the same amount of well-being. Sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. When we talk about sustainability, we have 4 pillars. The term sustainability is broadly used to indicate programs, initiatives, and actions aimed at the preservation of a particular resource. So we have human sustainability, which encompasses the development of skills and human capacity to support the functions and sustainability of organization to promote the well-being of communities and society. Economic sustainability, and to maintain the capital intact, and social sustainability, which incorporates the idea of sustainable development as this is defined by United Nations. And this addresses social and economic improvement that protects the environment and supports equality, and therefore the economy and society, the ecological system are mutually interdependent. And environmental, of course, sustainability, which places emphasis on how business can achieve positive economic outcomes without doing any harm in the short or long term to the environment. So why STEM is important within this framework? STEM education plays a crucial role in overcoming the challenges posed in achieving sustainable development goals. Achieving these goals necessitates a shift in STEM education, away from a focus on a purely academic technical knowledge towards a more broader interdisciplinary approach and complex problem-solving approach that combines societal and sustainable problem analysis with academic knowledge and solutions.
So STEM, of course, the project focused on inquiries, student-led investigations to open-ended real-life problems and hands-on activities, and reflects the 21st century skills. Characteristics of STEM students are problem solvers, they are innovators and inventors, they're logical thinkers, they're technologically literate. And STEM is related to lifelong learning. It's something that should be involved, should be included in everyday experiences of students. New technologies should define the content and practices of STEM. Broader social, cultural, and political factors should be considered, and students should deal responsibly with the technology. So STEM education is something that needs to be taken into consideration by government. Steering STEM education will require educational leadership and challenge. Curriculum change should be approached in a systematic way, and this could include promotion and faculty development. For instance, how is the engineering sector changing? Engineering is a problem-solving profession. It requires a problem-based approach to learning. From early school education throughout the educational system, science subjects will benefit from a more inquiry-based approach combined with design thinking and interdisciplinary collaboration with other school subjects. So, for instance, engineering students need to learn how to analyze and solve problems facing by society, and to develop technologies will improve sustainable living. That's why sustainable technologies are the need of the hour all around the world. These needs are enforced by major trends like emerging sustainable technologies and the employability agenda, as well as diversity issues such as gender balance. So, according to UNESCO, advances in STEM have already brought about improvements in many aspects of life, such as health, agriculture, and infrastructure. And according to World Economic Forum, this is important for the future preparedness of the countries. So, what should be our recommendations? First of all, we need to improve and strengthen STEM education in school. For all educational establishments, from schools and universities, departments, and all professional training bodies, there is the need to integrate the topic of sustainability in the curriculum in order to ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development. Secondly, interdisciplinary sustainable development and employability in STEM curricula, because governments should increase the focus on interdisciplinary curricula, sustainable development of professional competencies, combining them with funding models that support these needs. And national accreditation criteria should also be formulated, accompanied by incentives and rewards for institutions meeting these requirements. Investment in STEM studies is important. Government should promote and support STEM education students to develop pedagogy, teaching, and learning at a systemic level, and also should reward institutions developing new systemic learning models. Educational leadership for educational change, because creating this recognition system that supports, nurtures, and recognizes educational impact, it's very important for STEM education. Here in Greece, for the first time this year, our ministry has integrated a new cognitive discipline, which is called Skills Labs. And for the first time, we have this thematic session of STEM and robotics. It is integrated in the curriculum in primary secondary education. It's a great step for Greece. Of course, there is a problem of lack of funding, because we need technological equipment when it comes to robotics, for instance. And of course, teachers lack of training, so we need also appropriate training. And the rise of sustainability science, this all actually 4 trends are important for sustainability science and engineering. Intercross and transdisciplinary knowledge is breaking down conventional boundaries to create a more holistic approach. Entrepreneurship, which actually takes the form of tech-entrepreneurship, and the notion of diversity, which now is expanding and means inclusivity for all, including not only traditionally disadvantaged groups, such as those characterized by gender or socioeconomic background, but also personal characteristics such as physical condition and ethnic and cultural identities. Human ecological well-being also are 2 sides of the same coin, because STEM is adopting a more now sensitive and more holistic approach, a more cautious approach to human-made changes.
So we need to strengthen all types of cooperation for STEM capacity building in alignment with sustainable development. We need to expand and innovate STEM education globally, particularly in developing countries, and promote sustainability competencies for STEM graduates through lifelong learning and training. We need to establish diversity STEM systems and encourage young people, especially women and girls. We are still women in STEM. Women are underrepresented in this field to pursue careers in STEM. Develop sustainable professional organizations to support and maximize STEM potential, and encourage entrepreneurship by simplifying the business startup process. So, why? Because we need to further increase the collaboration between industries and schools and universities. For instance, when we talk about STEM, we can organize in schools hackathons and invite students to create original projects or devices, some patents, and then collaborate and move forward with industries. And how this is related to education for sustainable development, sustainability and STEM, education for sustainable development should develop individual values, knowledge and skills and competencies for sustainable living and participation society. And of course, promotes active learning, citizenship, student leadership. It empowers youth to share their voice and make a difference, promotes a sense of place and connection to community. And it's very important because it's characterized by contextual and locally relevant learning. That means that this should be interdisciplinary, holistic, and value-driven. We take our students, so we are implementing crossover activities in the nature, for instance. Students can learn better this way, can adopt healthier lifestyles, they can learn how to love environment. So students can be involved in a local or a habitat, the forest or a park, in effort to develop an awareness and concern for the environment. And this environmental education aims for a democratic, inclusive society in which effective, environmentally literate community members possess a sense of empowerment. So we need environmental education framework, which could promote progress towards sustaining a healthy environment, quality of life. Environmental literacy depends on learners' ability to ask questions, to speculate, to hypothesize about the world, to seek information. So we need to be familiar with inquiry-based learning, master fundamental skills, synthesize information. All this set of skills, questioning, analysis, interpretation skills, collecting information, working with models and simulations. It's important that students develop an understanding of how changes in one system results in changes in another. How they can investigate environmental issues. Students can consider evidence-differing viewpoints. They can analyze the consequences of their own actions and actions taken by other individuals. Another set of skills, how to analyze, investigate environmental issues, how to work with flexibility, creativity, and openness, how to develop decision-making and action skills, so how to plan and take action and evaluate the results of actions, how to develop personal and civic responsibility, recognizing rights and responsibilities, recognizing efficacy, developing agency, accepting personal responsibility. And here's some best practices of some institutions who combine STEM with environmental education. In El Paso community, there are students who actually measure temperature changes in ambient air compared to carbon dioxide to understand the greenhouse effect and the foundation of climate change. They use scientific databases about cities with higher pollution levels to examine the relation between income, education, and health. Other students explore causes of thermal inversions and use data sources to find the major pollution sources. Another program in California, students develop water solutions measuring the safety of drinking water, and they apply intelligent planting techniques to conserve water in parched areas and testing water and soil samples to help protect the local watershed. So this challenge students initiate, develop, and implement a project which actually helps to develop the core understanding of environmental principles. Many interesting here in the USA, students chose to tackle plastic water bottle use at their school. Here in Greece, with my students during the COVID pandemic, we implemented this project, which actually is called the contribution of technology to the protection of health.
and it aims, it concerns the quality of life of residents of large cities, where the most type of living is living in apartments. On this project, students examined the nuisance factors of an apartment, and more specifically noise pollution and the harmful factors of the gaseous environment of the apartment, such as carbon monoxide, smoke, and dust. They created a miniaturized model of an apartment, sound detectors, sensors, as well as carbon monoxide detectors, sensors were installed. So the STEM technology used was an Arduino microcontroller, a connection board with resistors, LEDs, and others. So the goal of this project is to improve the quality of life of people living in modern homes. So students suggested solutions, because in STEM we don't give solution to students. Students should find a solution. We only give them the problem. Here in Greece, I'm working with the Greek Ministry of Education, the Directorate of Education, Technology and Innovation. Have launched recently a new STEM environmental project, which combines environmental awareness with STEM and arts. It's addressed to primary school students. Why primary school students? Because students need to be inculcated at this age the values of compassion, the values of service learning, of volunteerism, and how to love and protect the environment. This is based on Sustainable Development Goals, and helping students to learn about the climate zones of the Earth, about the factors that influence climate in Greece and also in other parts of the world, and to give suggestions. Students have the opportunity to experiment, create, and collaborate to solve ethical problems, express themselves artistically using experiential, exploratory, discovery learning methods, collaborative approach, and of course using digital tools. They can develop the critical thinking, environmental issues, and they can comprehend the solutions can also come from non-environmentalists to try and think of ways to protect the climate, to realize that we all have a responsibility to protect our planet. And some of the activities that have integrated in my project are some experiments to simulate weather phenomena that occur in Greece and other places, how to measure temperature, pressure, humidity, and other weather parameters, how to build a mini meteorological station, and other activities. Why this? Because through this project, students are encouraged to build systematically with scientific environmentalists from an early age. Therefore, they have opportunity to enhance their social sensitivity, their ecological consciousness, and their environmental responsibility. Apart from this, I'm the founder of many international humanitarian STEM projects implemented in Africa and Asia, and they're related to sustainable living. This was implemented in Malawi, in Africa, mostly, and it concerns water, how to teach about water awareness to students who are thirsty, how to teach about water awareness to students who don't have school supply at all. In this project, I have integrated some activities using only natural resources. So students perform amazing activities. They perform water experiments. They created mind maps using branches of trees. They created models of boats using wood and every material that they had at their disposal. And the impact was great because we managed to obtain sanitation of internet equipment, and 6 wells were drilled in areas of Malawi where children had to walk away, as I said before, 90 minutes to find clean water to drink. Another project is called the Food for Thought. It was implemented in India, and it actually concerns healthy food combination in case of food shortage. It had a great impact because it inspired Indian teachers who visited slums, the students, and educated their families and donated their money. Another project also about gender-based violence, etc. All these projects have received so far over 200 awards. Of course, this project aimed to promote positive peace. They can't stop war, but they can improve the quality of life, the standard of living of all these students who suffer from disadvantages of negative peace, such as lack of water and food. So I think that adopting STEM methodology, philosophy, and related with environmental education for STEM development is something very interesting for educators to explore. Thank you very much for your invitation. Any question? Thank you so much, madam, for sharing a wonderful presentation through PPT. And I also like
that the inquiry attempts to find the solution of problem that is very much needed. The scientific camper can only do that, and as a teacher educators, we need to bring that scientific temperament in our students. We also would like to congratulate you that today I found a new term that not only with the academic literacy, we also need to inculcate environmental literacy. A very good job done by Rihanna Lepidam. Thank you so much from college and RFI. Thank you so much, madam. Thank you, Rania ma'am. Thank you. Now, request Prudence Onaha, ma'am. Prudence Onaha, ma'am. Yeah. It's nice to be with you all. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, you are audible. Over to you, madam. Okay. I'm very happy to be at this esteemed event, and I would like to thank the organizers. And special thanks goes to Research Foundation of India for inviting me. So I'm joining this event from Nigeria, and I'm really excited to be among all of you. So today I'll be talking about innovation in multidisciplinary areas, and I'm going to cover 3 topics, which are what innovation is, how innovation comes about, and why innovation is so important. In today's world is already digital, and innovation is changing everything. The world is advancing. Personally, I work in the creative industry and in ICT, in information technology. So I see every day how innovation is taking over and making things to evolve. And by February this year, there is already this artificial intelligence, a robotic humanoid that is going to represent somebody in court, in a New York court. So even in the field of law, innovation is also taking over. And some people are speculating that at this rate of innovation, that many people's jobs are going to be that innovation in ICT, innovation and robotics is going to take over many people's jobs. So it's very important that we follow the trend. So what really is innovation? Innovation is to change something, to make something new, to develop something new. So if you look at the current standards and you change it, you have innovated it. So in the field of technology, innovation is to develop and to use new technologies. And how does this innovation come about? Innovation starts at the stage of creating it and ends at the stage when it is adopted. So it starts at the stage of creation and ends at the stage of adoption. So when you innovate something, when you create something new in your field, whatever your field is, or even in the technological field, it has to be adopted by people before that innovation would have been effective. So innovation starts at the point of creating and ends at the point of adoption. And innovation, technological innovation, has taken over all areas in healthcare and in engineering. Use of robotics is very popular now all around the world. So in these fields, the people who are in these fields are very innovative, and they have used technology to upturn how things are done. Even medical data, you now use technology to do them. But how does this technological innovation comes about? It comes about following our basic need. Once a need is identified, it creates a gap, and that gap has to be filled. So people who create these new standards and new things, they fill in those gaps through innovation. They meet our need by technology, and so we say that they've innovated something new. So in the ICT industries, by the time you are using something, probably a new software or a new product, when the person who produces sees that there is a need that the customers want and this software is not fulfilling, they go and make it better. So that's what innovation is all about. And this innovation, now, why is it so important and why are we talking about it today? It's very important for 4 reasons. It's important because it is a driver of growth. Innovation drives growth.
A society cannot grow if they are not changing their standards, their way of doing business, which is innovation in commerce, innovation in education, that's their way of learning, and then innovation in healthcare and in all the fields that we are concerned about in this conference. If society is not constantly innovating or changing how things are done in these industries, then we will not grow. So innovation is a driver of growth. And then innovation promotes stability. It promotes economic stability. The countries that are the most innovative, they are also the most economically stable. You get? So innovation promotes stability economically and otherwise. Then it also promotes ease and efficiency. Innovation makes it easier to do things. So in the field of technological innovation, for example, the more technologies you have, the easier your work is. And it's not only easier, it's also efficient. So many companies and businesses today, they provide their workers and their employees with enough technologies to make their work easier. In healthcare, robotics are being used there. They are used to make things easier. And even in commerce, if you buy something in India today, I can get it in Nigeria. How is that possible? It's through innovation and through technology. So it makes it easier, makes it more efficient. And then I think the most important use of innovation is that it is improving lives and giving us better standard of living. There are many people who have plugged into innovation to have a better life all around the world. So I feel that that's the most important use for innovation and why it's important for us to consider it and for us to implement it in government, in our countries, and in our economy. So, in conclusion, I would like to say that the world is advancing in all areas, in all fields. The world is advancing rapidly, and if you want to catch up, you have to take note of where the world is going to, what the trends are, what the technological innovations are, and then adopt them. So for you to create your own impact, you need to look at what technological innovations are happening and adopt them in your own business and in your own country. So that's that about innovation in multidisciplinary areas. So if you are in the field of commerce, management, science, engineering, medical, education, ICT, humanities, law, and even agriculture, you should look at how innovation or technology is changing your field and then key into it and see how you can make it better. For example, in my company, we do writing and publishing, but we are looking at how to use technology to make it better. For example, integrating software to help businesses to do their emails. So by the time you do this innovation, you see that your work is more efficient and it's easy. So I'm very pleased to be here today, and I'm really excited to be among you all esteemed guests. And I'd like to say thank you again to the organizers of this program, and especially to the Research Foundation of India for having me. Thank you. Thank you so much, Madam, for putting your views on innovation. And I like the way that you say that changing in innovation starts from changing in you. Thank you so much for coming to that. Now I would like to request our next guest, Sonesh Bharadwaj. Thank you. Sonesh Bharadwaj. Very good afternoon. I hope I'm audible. Yes, madam. Please go ahead. Yes, give me a minute. All right. First of all, very warm good afternoon to all of you. It's my immense pleasure to be here in this international conference on innovation in multidisciplinary areas in the field of commerce, management, science, engineering, medical education, information technology, humanities, law, and agriculture. I'm extremely gratified to be here on behalf of RFI for this lovely Thank you, invitation. sister. And I also extend my gratitude towards Umiya Kanya Mahavidyalaya, Indore, for conducting such a wonderful international conference.
And apart from this, with all the eminent speakers and all the personalities across the globe. Today I'm here in front of you. I'm joining all of you from Bangalore, India. And I will be sharing my views when it comes to innovation in education. When we talk about innovation in education, it can lead to better overall outcomes. In the school environment, innovative classrooms are filled with students who are developing strong communication skills, and we need to understand why innovation is important in an education system. I believe embracing innovation in education promotes critical thinking, a sense of adventure, and an openness to adapt that will serve basically all our students in the classroom. It will provide them with all the necessary tools to tackle the challenges of their future workspace and give them the confidence and skills to continue to adapt, building engagement capacities amongst their peers. I also would love to focus on what are the three kinds of innovation which we need to understand in education. The three types of education innovation products are products or service innovation, innovation in technology, and tools or instrument. Finally, innovation in knowledge or methods. All these three different kinds of innovation needs to be explored, especially when we talk about education as a sector. Now, how do you bring innovation in education? That's a serious question we need to ask to all of us because we are dealing with the most important part of a human life and nothing less than education. Now, there are 10 innovative teaching strategies which we need to focus here for better student engagement. What are those? First one, you need to flip the classroom. Second one, you need to focus on personalized learning. Third one, you need to focus on project-based learning. Fourth one, inquiry-based learning. Fifth one, jigsaws. Sixth one would be ask your open-ended questions. Peer teaching. And finally, if I have to tell you, it's all about the masterpiece called blended learning. I would also love to share with all of you the 6 very common examples when it comes to innovation in higher education. When we talk about examples in innovation, first is competency based learning. Next could be video streaming, flipped classroom, or learning trends, which is right now trending everywhere. Third is open curriculum. Fourth one, changing nature of faculty. Changing revenue sources for institution funding, digital textbooks, 3D printing, and use of data analytics. These are some of the very common examples of innovation when we talk about primarily in terms of education. Now, equally important is to understand what are the various challenges in innovation when we specifically talk about education as a sector. There are 12 barriers which I would like to highlight here. First one, busy parents. We all know today life has become very, very fast paced. And when a child has been put into an education framework, fortunately or unfortunately, both the parents are working very, very hard in order to sustain the committed, I would say the daily requirement, whether it is related to education of the child or primarily their household needs. Funny part. Next is drive by professional development because today professional development has become the key role factor. No matter what, whichever area of your life you're competing, you need to be professionally well at the top of your game. Schools and community climate changes very beautifully. Right now, our international expert Rania Lumpu from Greece has explained and focused on climatic situations. Next one would be bad policies, meetings. And finally, I would like to focus all of you on overly rigid professional learning communities. Yes, I know it pains when we talk about the right facts, but this is the fact, and it's high time
that we need to accept the reality and the practicality of our education system if we really want to bring innovation and right meaningful changes as far as education is concerned. Now, what are the various, I would say, innovative teaching methodology if I have to talk from a new normal? Because very recently, we all have seen a turmoil in everyone's life through the form of COVID 19. India, specifically, being a country where we never believed into the concept of online education, because we believe we need to be more socially present, we need to have more focus on classroom trainings. But look at this, the change which India has adopted the most. Today, all blessings through this technological mind frame that we are able to sit any part of the corner and we are connected so well. We are physically not present in Indore, but very wonderfully I'm enjoying my entire international conference, listening all the brilliant brains across the globe. And for the last 4 hours, I'm sitting on this conference and enjoying every bit of it. So we need to understand change is the main important factor rather than just putting our mindset into a very stereotyped mind frame and orthodox principles. Second is project based learnings is something which we need to focus here, and we need to have more open ended question asking system when it comes to faculty and a kind of interaction between students, no matter what, you are at a school level, you are at a college level, or you are at a research level. Students needs to be more committed towards asking their questions in the form that it clears their mindset when they are appearing for more competitive stuff in their lives. Finally, I also want to focus here. The most important and primary agenda here is culturally inclusive teaching methodology needs to be inculcated, and this is the high requirement, I would say, into the teaching practices which we need to implement on. Today, I found because being a global motivational speaker and a certified life coach and a leadership coach, I keep interacting a lot of youngsters, corporate individuals, and it's been last wonderful 18 years in this journey. I met all sort of people, and I always try to understand where these people are suffering in their life or in their professional career. All I've understood is they have brilliant ideas, they have brilliant thought process, but until unless you are not ethically grounded, you are not morally grounded in terms of your cultural root values, I'm so sorry to say, no matter what, wherever you go and study, it's all going to go for a toss. So today it is highly required to imbibe this cultural inclusive teaching methodology, whether you are which level of education doesn't matter, because culture needs to be inseeded first. Now, my final touch point come here says, how does this innovation impact the whole education system? Primarily, if I talk about all the top, you can say the educators across the globe, working with them, understanding them, the concept, all we have understood is creative thinkers requires to be more inseeded when it comes to the concept of thought process and putting right system frame of services. These concepts we take for granted today because once upon the ideas drawn or developed on a whiteboard in a room full of people was called as a brainstorming. All of these ideas were born out of the notion that innovation is critical to the consumer mentality of the world. Now, recent education innovations and their impact, if I have to talk, like the consumer world, innovative practices in education are critical to new growth and changes as well. As very just 2 minutes back I have mentioned that how India being from a mindset of always into the principle of getting into a classroom training has changed very beautifully into an online mechanism, and today no matter what which part of India you stay, you can very well and very comfortably go and attend any high end meeting conference from the ease of your home. That's nothing but a main principle change we all need to bring. When examining innovative practices in education, there is more to innovation than technological innovation. Innovative practices in education involve how we use technology. Today, very brilliantly, one of our many main chief guests
probably has highlighted that we all have modern gadgets in our hands today. We all use mobile phones, we have laptops, we have smart techniques to go and access each and every information. Google is there because we consider each and everything is available on Google. I consider that we are into the era of social media, but unfortunately, we are no more social, right? So it's high time to understand what we are implementing onto the ground level. Do we understand how to optimize and how to have the efficient use of technology which is being blessed to us? Moreover, innovation in education can be as simple as doing things in a new way, requiring different approaches, processes, products, or strategies. For educational leaders, we strive to constantly redesign the concept of education to meet the needs of diverse learners, paving the way for innovation that is relevant, personalized, responsive to the classrooms as well as to somebody who is not in the classroom frame. It can lead to better overall outcomes in the school environment. Innovative classrooms are filled with students who are developing stronger communication because today we all know we are into the digital age. And if you don't have a command on your communication skills, no matter what, wherever you go and apply for your betterment and career enhancement, you will hit as a barrier. You need to have a greater involvement and engagement between students, parents, and school faculties, as well as college and research faculty members. Because I believe it's a equal give and take kind of policy which we need to understand, and we need to become more open minded when it comes to interaction so that even parents or guardians can be looped up very properly into the education system to understand their real role when it comes to education as a responsibility. Overall, when we talk about multiple innovative trends, practices have emerged. The first is problem or project based learning, as I was talking, in which students take an identified problem and use those innovative practices, collaborate, and use the creative thinking processes. These all need to be implemented into multiple disciplines without fail. Professional learning communities needs to be creative. People need to be more creative when it comes to connecting with people onto the different areas of whether it is life, whether it is humanity, whether it is education, it is art, it is any technical or non-technical areas, because you are not balanced human being until unless you don't understand all these areas in your life. Overall, just by having a formal education through your degrees and certificates will not help you furthermore. You need to be more inclined towards the practical approach of learning format. And that is nothing but you need to include social, spiritual, and more techno grounded spiritual being so that you can enhance and groom yourself in overall development. That is the key focus we all need to plan and make in our learning systems. Finally, if I have to tell you in terms of traumatic experiences, this is one highlighted point which I want to tell everyone. Today, a lot of youngsters, when I counsel them or talk to them, I found they are very depressed instead of having each and every best facility across them. When I talk to higher learners, higher educated thesis scholars, when I just go and interact with even scientists as their core functional areas, I found all these particular professionals have their own traumatic experiences in their own life journey. How they have dealt it, that's very very important, because it's not like somebody who sounds to be happy doesn't have a depression or a stress level. We need to understand the language of social and emotional learning, which is the main key focus right now. Everyone needs to understand in their life, because if your emotions are not under control, mentally you are not stable in taking your right decisions, you are going to suffer big time in your life. So traumatic experiences needs to be tackled very well, and especially at the student level or in any phase of life where you're learning or going through a rigorous change in your life. You need to tackle this area very very innovatively and stabilize your all the learnings. As society trends towards technological advancements,
Creating conditions in our schools, colleges that fosters and supports innovators and educational entrepreneurs is the key. I always say to youngsters, don't only focus on right now ready made job seeking scenarios. Try to be more innovative when it comes to entrepreneurship, right? Because you can only grow in your life when you are filled with a lot of innovation and you are not hesitating yourself to give a try your hands out. Student life or college life is the best way to start up your entrepreneurship journey and trying your hard hands out into something more meaningful, which can eventually put all of you towards the better future in terms of learning, developing, and becoming the more powerful citizen of your country. Finally, I would like to close my entire this talk with the technology as a key component of innovation, remembering that human element of our learners is absolutely vital as well. Although innovative tools are useful, the effectiveness of them depends on the learner and providing them with the appropriate exposure to innovative tools that can only help in their understanding of how to use properly these tools. When integrating various innovations in technology, we must consider the potential benefits and challenges while developing these innovations into successful teaching and learning practices is the whole and sole key criteria I believe we all need to go and master, whether we are educators, whether we are life coaches, whether we are from any stream of life, whatever we are doing. We need to understand these all areas are very, very vital and I would say very essential, and especially from the learning point of view. On that note, I end up my talk. Thank you so much once again to all of you. Love, light, and peace from Bangalore. That's all from my side. Thank you. Wishing you all a bright future and a very, very happy new year ahead. Thanks a lot. Thank you so much, madam. The panel like the biggest area technological upgradation in education is very much important. And we also believe that technological upgradation is a part of innovation, but it should not be the barrier of communication between person. Thank you so much, madam, for giving us time. Thank you very much. Thank you. Thank you once again to everyone. Thanks a lot. Now I would like to request Dr. Soumi Datta. Dr. Soumi Datta, Associate Professor, Institute of Engineering and Management, Indore. Very good afternoon to all of you. Am I Yes. audible to you all? Yes, madam, you are audible. Please go ahead. Yes. I would like to share my screen and start my topic. So still now I have attended from the very beginning the entire conference. So first of all, many congratulations to those to the entire organizing committee, those who have arranged such a innovative international conference, that is innovation is multidisciplinary area in the field of commerce, management, science, engineering, medical, education, information technology, humanities, law, and agriculture. So where we have learned a lot from our all previous speakers, that really how much technology and innovation help us in our regular life and how much we can gain from this. So basically technology always came and help us to make our life too easy, but at the same time we are having few of the threats whenever we are using that technology, because every time it is every side everything has some of the advantage and disadvantages. So I just want to give a light in my topic. I just want to enlighten few of the things where we should stop ourselves being exploited by few of the persons, those who are actually trying to exploit us.
So as technologies are quite available to us, and when mobile technology and different sort of technologies where computer oriented technologies are too much available to us, so in that case definitely we should be aware that how the spams are getting out and how the fake news are coming to us, which one to release and which one not to release, and how the computer science and engineering is trying to basically focus and add some value in this area. So this is my few of the highlights that I am basically just completed my PhD in 2019, and previously I have completed my engineering in MTech and BTech also. In MTech I was first gold medalist. So these are few of the membership and award I have received. So for future collaborations, definitely we can collaborate and we can go ahead with some new innovative technology to sum up with. So here I'm just starting my talk. As the innovation and technology we are talking about, everything is taking place. So we are communicating to each other most of the time, many times not in front, and after, especially after the COVID scenario also, and during the COVID pandemic, basically we are too much getting dependent on technology on our small mobile phone, and we are trying to manage our entire network there. So whether it is a network with our relatives, sometimes it is our professional network, sometimes networking with our friends, and many more. So that's why all the sites and all the microblogging sites, all the social networking sites, these are quite flooded with all the information. So in that scenario, we need to know that how to find out the exact information. And the challenges are basically that we are not only communicating, few of the spammers are also there, those who are also taking the advantage of this sort of technology, and they are trying to post few of the informations which are fake also. And not only this, there are many newses which are also coming in form of some media and which are fakely generated, and it is given to us. So you can see there a funny photo I have tried to include here. Here actually the entire story they are trying to prepare, and they are trying to deliver some of the other story to us. Unknowingly, many times we try to propagate, we try to share many of the things in our social network, WhatsApp, and everywhere. And that's why many times few of the informations are getting trending. Maybe most of the informations are true, but there are a huge amount of information which are exactly not true. So definitely whenever we are trying to go through a news, particularly few of the things we need to know that from which source it is coming, who are the actually person who is posting that particular news, and what are the information, whether any timestamp is given there, any particular image is given there, whether the image is morphed or not. Many sort of things we need to know before we take a decision that whether it is a fake or non-fake. And many times a rumor also gets spread via some of the of some of us, and we try to visualize, being a spectator, many times we try to visualize an event in some of the other way, and we try to morph the reality, we try to reciprocate that one, we try to explain that one in our own way, and the entire interpretation gets some of the distorted, and the actual reality we are not getting, we are just getting some of the partial reality, and rest of the things are not actual. So how to get convenient information, that is also one of the target. Few of the categorization of the news, what we need to do, we need to check the authenticity, and detection of that spam or spammers is highly required. So that's why everywhere wherever we are trying to use any of the information, this sort of rights also given to us in the internet, in the technology, that at the same time whenever innovating and delivering some of the good item or good product to the entire society, also they are giving us the facility that we can block a user, we can just mark a person as a spam, everything. Not only in case of any websites, if you just look into that true caller in a call as a caller caller app what we try to use, there also there are provisions that we can give our views also, and based on the views the owners will take some of the actions, because it is really very challenging task at the, this is the drawback side of the technology. Many times we are getting trapped into
many transactions are given, many informations which are getting stealed. So these are the reasons why we need to be aware too much. Feature extraction is also needed. You can see one of the diagram I have tried to show you here. This is a scenario for 2009 and 2019 for a same place. And in case of the image, what is given in the upper side, you can see that along with the image, some logo is given, WWF. So basically, if we are getting proper information, some watermarking should be there, some source should be mentioned there. But in the bottom section, what the image you can see it is totally a combined or some morphed image or edited image. So actual information we are not getting from this one. So that's why the verification of information also need to necessary whenever we are trying to get different sort of information. And proper specifically, if it is a cloud sourcing platform where anyone can post anything, then definitely we need to rectify this one. And before we forward a message, being a technical person or being a non-technical person, we should have few of the awareness. We should have that if it is a fake one, then we will not try to propagate this one. So that's why we should have this sort of also awareness we should generate among our society, where user will be at least this much awareness a person should have, that how to handle the technology. Many times technology gives us so many advantages, so also we need to think or think about the drawback. So as we know that OTP system also has come, that where a person will be authenticated by a particular OTP if I'm trying to make some transaction. So there are also so many cases when the OTP are being shared over phone from the users. So that's why in that case all the crimes are getting happen. So we need to know when a facility are given to us by some innovation, by some technology, how to handle this one. That should be your more main agenda. Being a social servicer, we should give this sort of services. So there are some of the summarized features which is given here, that which will help you out to find out all the fake information, that whether how it is getting impacted. So there are some of the user based features, some of the news content based features, and some of the social tech context based features also, so which can help us to identify some of the features. Now all the features, whenever we are trying to find it out, and some we need to be specific one, that using which of the technique we can easily detect this sort of fake news, and we can come out with some outcomes. So I will show you few of the outcomes here, that this technology is called deep faking. And using the deep learning technique, which is a very common terms in today's life. So definitely you can see that original picture which is given in the left hand side, that has been deep fake, and using the deep fake technology we are trying to create another technology. So that is also use of a technology which has come into the market. So few are good one and few are the negative one. So if two videos are given, so then you can identify just looking at a single glance. Many times you need some reverse engineering technique, where you can retrieve and identify which is the original one, and how it is going to help you out. So that's why at the propagation with the technology and in all the innovation, we need to think of this. So these are the some morphed image also. You can see where different sort of technology are used in some of the wrong way, and it has been deep faked, and original information are not coming to us. So that's why, especially for the old generation, those who are newly adapting the technology, and the younger generation, the youngest generation, those who are adapting the technology newly. So for this threats, especially for them, if your child is having a mobile, what type of content that your child is watching, so whether how much he or she is learning from this, that also we need to monitor, we need to restrict. That's why we need to serve our technology in this way to each and everyone, that we can have some of the good outcome from this one. So these are the some of the few techniques of deep
faking, you can see that from where we can easily identify using, there is a application using deep face lab. So basically this is one of the organization, they try to find it out, actually the reverse engineering method, and they try to find it out how two pictures, if it is given to you at a glance, we cannot identify the difference, but using different sort of dimension recognition techniques and image segmentation, they try to give this sort of analysis and outcome, see how your changes are giving and how somebody can make you fool if you don't be aware of this sort of things. So that's why this sort of things are coming, and I'm being more technical, that we need to classify that how, when the news is coming, how to identify. So this is a focus, and this is some of the techniques what you can also apply and come out some of the knowledge from this one. So these are the ideas what we can propose, that if you are having few of the newses, you first try to do the basic pre-processing and go for some of the identification of modeling of your particular data set, and then you can go for the supervising learning cases. So definitely few of the experiments me and my team has done previously, and these are the some of the approaches how we have tried to identify the properly the fake newses, and the classification results was quite good what we get from the previous one. And at the same time also, it is not relevant that only if we have the features, then if you are trying to identify, then this is very good. Otherwise, many times if I'm telling you that from a particular topic, if there are so many data which is available in Twitter, Facebook, and in different sort of sites, so which are the information which is very subjective one, which is very truth, giving us a truth, particular truth, then definitely we need to do some of the experiments, and definitely we can identify few of the awards which are used. So definitely it is quite relevant to a particular topic, and few of the topics are also discussed there which is quite irrelevant. And not only this, there are so many spammers, those who used to post different sort of short URL. So nowadays short URL we try to use, actually we try to use it for our own benefit. It will, if you are trying to post some of your content where you are having some of the short limitation of your words, it will help you out. But if from the short URL, it is very difficult to identify that whether it is a fake one or not fake one. Unknowingly, if it is a fake one, and if it is having some of the cyber security different techniques are there, so that from where we can steal your information, if somebody is clicking, then it will try to transmit many of your information from your mobile or from your system to the spammers. So many times it are this sort of awareness also, many times we have seen that this sort of approach, good approaches are taken from the government even, that don't share your OTP, don't click on unknown link, that otherwise you can be in a trap. So that's why this sort of experiment also you can do, and you can find it out and take a decision what is finally. So these are the few of the features what we try to identify, and we do some of the experiments that which feature finally can help you out, that we have to take care of this feature, that if these features are present and how they are actually behaving on your data set. Based on this, you can take a decision that whether a particular news is fake or not. So here I will not much talk much more technical thing. One few of the things I just, before I conclude my topic, I just want to say that when we are talking about innovation and technology, so many researchers are going on, and definitely we are trying our level best, being an academician, those who are scientists, every one of us are trying to give our effort to give some good outcome. So that's why every time, being a general user, being a non-technical user, so every time we will try to give provide services to that person, and that person should have this much information what to do and what not to do. At the progression with the technology also, few of the scams are coming out. So whenever we try to install any of the application, basically, so we know that at the time of installing an application, we have no particular idea basically that how we are trying to give which are the permission which are giving to a particular user. Many times we have seen that at the time of installation of any particular apps, we are giving the permission of any another some of the application which is at all not required.
somebody is trying to capture your access your gallery, somebody is trying to access your location without giving this sort of permission also, that particular app may work. So please be conscious, be careful whenever you are adapting a technology, because so many things all around, some of the new things every day is coming. When you are adapting a new technology, please be aware that what am I doing and what is the meaning of that particular one. So unnecessarily, please don't give so much of information in the social media. And definitely when you are propagating, being a responsible citizen of any country, so definitely we will try to forward a message, we will try to propagate a message, and we will take the responsibility of posting some of the data which is very, very relevant to the society. So because with the innovation, with the technology, definitely we are coming we have already across so many thousands of years, so we are having so many things in our hand, but we need to know, otherwise this technology can work in a reverse direction and it can take your place, it can directly ruin us in all the way. Technology has both the powers, so it is totally depend on us how we will be trying to use that one. So thank you, and a very happy new year, wishing happy new year to all of you. Thank you, Dr. Ajay Jain, to inviting me in this conference, and I'm really, really very happy to associating with you all. And so many good speakers are there. I'm just going through each and every one speech. It is really marvelous. Thank you. I will be happy to share with my experience in future also to getting associated with you. Thank you so much, Swami ma'am. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you so much for giving your precious time for this conference and giving your innovative ideas for bringing everyone to knowledge about innovation. इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्री डॉक्टर रामकृष्ण जी पाटिलकार जी को कि वे सत्र की इस सत्र के समापन के लिए वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रामकृष्ण जी पाटिलकार जी, इस सत्र की कॉलेज। आज हमारे समस्त अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय पर आए तो लगभग समय पर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई। जरूर है कि अपन लगभग 1.5 घंटा लेट चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इस महाविद्यालय के लिए सौभाग्य है कि पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप सबके सहयोग से यहाँ हो रहा है। आप सबका अतुल्य सहयोग महाविद्यालय में मन से प्राप्त हुआ है और आगे भी प्राप्त होता रहेगा, इसी आशा के साथ सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अगला सत्र इस स्थान पर होगा और इसमें भी आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। यहाँ के कर्मचारियों ने 2 दिन मेहनत की, आप लोग ने लगभग 1 सप्ताह पहले से लगे थे और उसके बाद में आगे भी आप लोगों को 1 सप्ताह तक जब तक सबके रिजल्ट नहीं देना है, सबके पेपर पढ़ के फाइनल नहीं करना है, तब तक सहयोग आपको देना ही होगा। तो इस अतुल्य कार्य को अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही प्रबंध सत्र यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा टेक्निकल सेशन भी 2 अलग-अलग वेन्यूज पे किया जा रहा है। एक जहाँ पर ऑफलाइन प्रेजेंटेशन है और यहाँ पे जहाँ उपस्थित है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है। इसमें भी कुछ प्रस्तुत कर रहा है और इस प्रोग्राम के सेशन शेयर करने में मैं औपचारिक रूप से पुनः स्वागत करती हूँ डॉक्टर श्याम सुंदर जी। आप प्राचार्य हैं संस्कार कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। इसके साथ ही सेशन शेयर कोर्स सेशन शेयर के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर श्री मैडम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
So I would like to request Assistant Professor Dr. Umiya Madam to please come and take over the charge for the next session. Thank you so much. A very good afternoon to all. Commencing the program, I am inviting Ms. Shweta for a main presentation for technical session 2. Dr. Tatito Shavastri is also present with us as session chair. Shweta, please be on mic. Next one is Upasana. Ms. Upasana, Yes, ma'am. please go ahead. Ma'am, actually, me and Shweta Rani are presenting the paper together. I'm the research scholar and she's my guide. Okay, so I'll be presenting the paper. Okay. Good afternoon, all ladies and gentlemen. I'm present over here. So my research scholar will be presenting the paper hereafter. Thank you. Thank you, ma'am. I hope my screen is visible to all of you. Yes. Thank you. So, my topic is a paradigm shift in education policy for academic growth with special reference to hospitality education. Okay, and the paper is prepared by me. I'm the research scholar of School of Humanities, Management and Social Science of New York University, and my supervisor is Dr. Shweta Rani, who is the Associate Professor of School of Humanities, Management and Social Science of the same university. Okay, so as people play the most important role in shaping the status of the country, education is responsible for shaping a person. Therefore, education is the backbone of the country. Quality and equal access of education is a fundamental tool for achieving economic growth, equality, justice, development in science and technology, and also preserving heritage. So, as change is the only constant, and our country, India, is a developing country and facing lots of changes in terms of economy, culture, technology, and many more things. So there is a need of change in education policy also. And to compete that change, government introduced new education policy in 2020, which is built on the pillar of access, equity, quality, affordability, and accountability. Now, if I talk about the hospitality sector, India is currently experiencing a tremendous growth in the hospitality sector because of the factors like globalization and post-pandemic. Also, we have seen revenge tourism, which has given the boost to the hospitality industry. Okay, and this has also positively impacted the Indian economy and therefore creating a career with opportunities here. And if I talk about the job scenario of India, right now, the research has shown that India is lacking in the terms of skill, and unemployment is growing like anything. So I thought of connecting the new education policy with hospitality, as hospitality has many scopes of employment. This paper is about the study of education policy in India in accordance with the hospitality education. The objective of my study is to study the paradigm shift of hospitality education in reference to education policy, to examine the current scenario of the Indian hospitality education and to find out the probable implementation strategies of new education policy in the hospitality education. The methodology which I have used is, this is basically a review paper. It attempts to theoretically review the government education policies and even the studies has conducted by the researcher and practice followed by the hospitality education organizations. The secondary data is the main source of data collection, and it was collected from reports, journals, and magazines. And I have also referred and taken help of internet, and I've surfed many websites and gathered the information from there also. These are the literature review which I have done. Okay, so I have studied the Ministry of Human Resource document on new education policy, and I also referred some of the paper related to new education policy. And parallelly, I studied a research paper of hospitality education
focusing on the current scenario of India. What results and discussion I have found is that I found that the newly launched NEP reflects a positive impact on hospitality, education, and employment generation. The new education policy is mainly focusing on vocational studies and has a multidisciplinary approach. So the approach of NEP, that it is promoting the vocational courses and the approach. So I think that more and more students will now be getting interested towards the hospitality education, as now there is no strict bifurcation between science, arts, and commerce, and even the universities and even in school we have now elective subjects. So I think that as a hobby or as an interest, more and more students will be coming towards this. And but it, as the education is a concurrent subject, so it again depends on the state and central government. Okay, so to conclude with, there were many earlier policies were not mainly focusing on the skill development thing and vocational education. So this policy brings many hopes for the hospitality industry, and ultimately it will benefit our country in terms of skill development, in terms of employment generation. And this NEP 2020 is very suitable for hospitality, and we bring to see many more students and many more employments in this sector. These are the reference which I have taken, some of the references. Thank you. Thank you, ma'am. Inviting next Dr. Jyoti Ghosh and Dr. Mansi Mishra for next presentation. Dr. Jyoti Ghosh, Dr. Mansi Mishra, if available, please give your presentation. Next one is Dr. Nidhi Sharma, ma'am. Dr. Nidhi Sharma, ma'am. Dr. A. Joy Chandra Singh. Dr. A. Joy Chandra Singh. Next is Dr. Mohinder Kumar. Am I audible, ma'am? Yes, sir, you are audible. Okay. Please allow me screen sharing, please. I want to share my screen. Kindly allow me. Okay, sir. All the participants, please pay attention that you cannot exceed the time limit of 5 minutes. Kindly allow me to share my screen, please. Allow you. Sir, your screen is already shared. वो उनकी साइड से करना हमको शेयर. I am unable to share my screen at present. Hello? Yes, sir, we are not able to see your presentation. Actually, you have to allow me to share my screen. So I will read out my presentation, okay? तो अभी भी तो अपने presentation देखा वो तो already आई. So there is not any such option. You can share it if you want. Okay, I will read out my presentation. So my topic of my presentation is a study on molar conductance of oxalic acid and its salts in binary aqueous mixtures of acetonitrile. So as we all know that transport properties like molar conductance are very useful for the study of ionic solvation, and these properties can give information on the effective size of moving particle in solution. So these properties are sensitive to strong ion solvent interactions, which increase the effective size of the ions and also to any modification in the structure of the solvent. So we have measured the molar conductance of oxalic acid and its salts, ammonium oxalate, sodium oxalate, and potassium oxalate in 3% weight by weight composition of acetonitrile plus water mixtures at 5 different temperatures. And what we analyzed here, that the molar conductance decreases with the increase of concentration of an individual solute. So it is also clear from
are measurements that the value of molar conductance increases with the increase of temperature for a particular solute, and which may be due to the increase in ionic mobility with the increase in temperature. And we have analyzed the data with the help of Onsager equations, and where we have plotted the molar conductance against the square root of molar concentration. And the linear plots have been obtained in this case also. And from these plots, we have determined the molar conductance at infinite dilution. So the motion of an ion in limited by its interaction with surrounding solvent molecules due to because there is no ion available in the finite distance. That's why the molar conductance at infinite dilution gives us reliable information regarding the ion solvent interactions, and greater the value of the molar conductance at infinite dilution, greater will be the ion solvent interaction. And further, we have measured the association constant also, and your association constant, it also decreases with rise in temperature, which suggests that the ion pairing decreases with rise in temperature. Further, we have measured the Walden product, and that has been calculated by multiplying your molar conductance at infinite dilution with the viscosity. And this temperature coefficient of the Walden product is negative for oxalic acid and its salts in water, and which can be attributed to the increase in ion solvent interaction and structure breaking characteristics of oxalic acid and its salts in acetonitrile plus water. Hence, we can say that the oxalic acid and its salt, they act as structure breaker in acetonitrile plus water. Further, we have also measured the entropy and enthalpy of activation here. The positive values of enthalpy of activation indicate that the ion association processes are endothermic in nature at all temperatures, indicating the absence of very weak ion association. And the positive value of entropy of activation indicate the random order of ions in organic solvent plus water. So we can conclude that from our experimental studies that for molar conductance of oxalic acid and its salts, that the value of the molar conductance, it increases with increase of temperature for a particular solute, which may be due to increase in ionic mobility with increase in temperature. The value of association constant is decreasing with rise in temperature, suggests that the ion pairing decreases with rise in temperature. And further, the negative temperature coefficient of Walden product shows that the oxalic acid and its salt, they act as structure breakers in acetonitrile plus water. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Inviting the next presenter, Gulshan Kumar. Mr. Gulshan Kumar. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am here. Ma'am, I am unable to Yes, sir, you are unable to share my screen. Whether I read out my presentation? So your screen is not shared. Yes, ma'am. I am unable to share my screen. तो रीड आउट कर दो Ma'am, I am working in the field of radiation physics. So my research is, this paper is related to the application of radiation physics to various geological processes. It is just an innovation in the applications of radiation. Yes, ma'am, my screen is not So shared. there is an option on the screen sharing or share your screen now. You have to click that. Okay, ma'am, I'm okay, ma'am. Where it is shared? Not yet.
So there must be 3 dots on your screen. Okay, मैं कोशिश कर रहा हूँ. I am trying my. Yes, ma'am. Yes, it is sharing now. Okay, ma'am. Yeah, it's shared now. No, I am working in the field of radiation physics, in which there is an innovations that how radiation physics can be applicable to check various geological processes. In this search, we have check the applications of radiation physics to geological processes, whether it is applicable or not. So the studies in this present study, we have checked the radiation physics radiations are coming from various decay of the radon thorons and their correlation to various geological phenomena like transport of hydrothermal fluids in various geological settings in different corners of birds with numerous techniques. Most of them have reported a good correlation magnitude between the concentration of natural radioactive gases and the presence of fault beneath the earth crust. So our review paper is related to Northwest Himalaya region of India, which is continuously under the geological stress and the strain. Therefore, work is important in both contexts, geological exploration and measurement of the radiation hazards. So I'm just presenting my area. This is my area under study. This area is continuously under stress and strains. I have in this area we have MCT, main boundary thrust, main central thrust, and other fault and thrust systems. In these thrust systems, we have a secondary porosity. So continuously gases and high thermal gases are coming out of these areas. And also this area is under very seismic threat. So, so this area is need to be continuously monitored using various techniques. Since from above surface, we cannot check the geological phenomena inside. So passive techniques need to be monitored or need to be innovated. So radiation physics is one of this can help the exploration of geological phenomena beneath the earth. So in this way, we have checked various researches and find a conclusion that whether this technique can be applicable or not. So we have taken different researches that are earlier been taken in this area. So one of them is Valian et al. They have done same type of search and use techniques, radiation physics techniques to correlate the various tectonic process. Then Singh et al., different Mahajan et al. We have our papers itself, 2013 Kumar et al. And 2014 and 2016. So we have taken so many surveys and geological radiations concentration measurements in the area of Northwest Himalaya, along with various radioactivity gases. We have also measured the carbon dioxide, methane fluxes that were the convective losses that are taking the radiations out of these areas. Now, finally, when results are discussed or there's various the studies have been included, we have shown that the radon thoron anomalies and the oxidation rates are having a very good correlation between them. If there are radium contents or the radioactive metals are present in the earth, so naturally the radiations will come out. Then next is the radon concentration and flux density and the convective velocity. They have also a very good correlations. There is also a good correlation between the radon thoron anomalies or the radiation anomalies with the fault and thrust systems. So most researches have shown that if the concentration of the radiation or the concentration of radioactive substances are more coming from certain systems, then there are certain presence of fault and thrust systems. Since the secondary porosity also allows the different type of hydrothermal fluids to coming out of the surface area. So the presence of different hydrothermal fluids or different gaseous hydrothermal gases can also be detected using the radiation physics techniques. So conclusion, the studies that has been taken between Northwest Himalaya, which is basically Himachal Himalaya, it is a technically very active, and the anomalies related to radon thoron, which are the natural radioactive gases, along release of concentration of other gases, can predict the presence of fault and
trust system in this area. The study can also show a good correlation between the radium contents, radon parameters like radon concentration, radon flux density, and its convective velocity. The radon concentration depends not only on the radium contents, but significantly on its flux or the convection that further depends upon the porosity of soils. If secondary porosity, that is fault system, are present in the region, the anomalies may be recorded. The seasonal or weather condition may also affect the gas release, because on the different type of season, the porosity and soil pH may change drastically. This study may further be extended to develop a correlation between the groundwater potential of this area. Also, this radiation physics can also be used further to develop some models related to the greenhouse effect, greenhouse effect, or the temperature related models, or related to the environment of particular area. Thank you. Dr. Manisha. इनको दे दो सो पीछे Dr. Manisha. Dr. Deepak Jha. तुम्हारा जो वीडियो है Dr. Deepak Jha. अभी फ्री है Ms. Vaishali Kanya, Sanjeev Kaur sir. Yes, madam. Vaishali ma'am, okay. Am I here, madam? Yes ma'am, you are audible. मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है. हेलो. Yes. Yes ma'am. I am sharing the screen. All the participants, please pay attention. Your I presentation am sharing the is screen. 5 minutes. Very good afternoon, everyone. मैडम मेरी स्क्रीन मैडम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? No ma'am, PPT is not visible. मैडम स्क्रीन शेयर हो रही है? Please share now. Yes. A very good afternoon, all of you. I want to thank Shri Umiya Kanya Mahavidyalaya, Rangwasa, and Research Foundation of India for giving me opportunity to present paper, and Vaishali Kadve from Shri Sakti College for Women Bhopal, and my supervisor is Dr. Sanjeev, and my topic of paper is Impact of Machine Learning Techniques in Agriculture and Data Analysis. Huge amount of data is generated in various fields like medical, agricultural, educational, healthcare, entertainment. It is required to analyze large amount of historical data to acquire knowledge. The meaningful insight drawn from the analyzed data can be used for decision making and respective areas. Researchers across the world are working day and night for finding the various tools and for data analysis. Agriculture is the backbone of the country and reflects the economic growth of the nation. It produces 80% in employment in our country and fulfill the food requirement of people globally. Researchers and people involved in the agribusiness are interested in finding various techniques for precision agriculture. Machine learning is one of the best techniques for analyzing agricultural data. This paper is focused on studying impact of machine learning technique in agriculture. Applications of agriculture, applications of machine learning in real world. In digital era, technology like machine learning is good for us, and the machine learning technology is growing very rapidly every day. We are using number of machine learning applications in our daily life, even without knowing it, such as Google Assistant, Google Map, Alexa. The figure shows that most trending real-world applications of machine learning like speech recognition, image recognition, traffic prediction, medical diagnosis, product recommendation, stock market trading, online fraud decision detection, spam detection, and malware filtering,
self-driving car, and etc. Machine learning is the branch of artificial intelligence. Machine learning technology enables a computer system to learn automatically from the historical data and develop prediction model and predicts the output whenever it receives new data. Machine learning method broadly classified into three categories such as supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Applications of machine learning are in agriculture are the monitor the crops and detect the various diseases of plant, develop the smart irrigation system, suggest the best crop for plantation, suggest the proper time for harvesting, and predict the crop yield, supply chain management. Machine learning algorithm used for agricultural data analysis are classified into four categories: classification, clustering, association, and regression. Classification, clustering, and association rule are used for the analysis of data, and regression is used for the prediction of data. For conducting the review of previous literature on using machine learning technique, the following questions are defined. Which are the algorithm used for the prediction of crop yield? What are the various parameters are used, and what are the algorithms used for the agricultural data analysis, and what are the challenges and future scope? Machine learning technique used for analysis agricultural data. According to the previous research, it is found that 75% classification algorithm, 11% clustering, 5% association rule, and 1% time series are used for the classification purpose, analysis purpose, and classification technique use maximum for data analysis. Various classification techniques used for the agricultural data analysis, it is found that 20% decision tree, 15% K nearest neighborhood, 23% random forest, 15% support vector machine, 10% neural network, 9% navy base, 5% gradient decision tree, and 5% required grady forest, and C4 analysis purpose. It is found machine learning technique used for prediction of agricultural data. It is found that 41% multiple linear regression, 22% random forest, 12% vector machine are used for the prediction purpose. Conclusion: as agriculture is the primary source of food and plays major role for the Indian economy and employment, or to fulfill the increasing food requirement as well as accelerate the economic growth of the country, it is necessary to improve the crop production by doing precision agriculture. Machine learning is one of the best techniques which provide many methods to predict the crop yield. Machine learning are the applied on agricultural dataset to draw meaningful insights which are used to government and the people involved in the agribusiness. The policymakers. Ma'am, your timing is over. Next. Sorry for interruption. Next one is Mr. Virat Shankar Goel. Ma'am, am I audible? Yes, sir, you are audible. Ma'am, Deepak Jha, this side, you have taken my name earlier, prior to Vaishali ma'am. Sir, you can present at the last of the. Pardon, ma'am? Sir, you can. Sir, your name is Deepak Jha. Deepak Jha. So your chance is over. You can present at the last of the list. Please wait for 10 to 5 minutes. Mr. Virat Shankar Goel is the next one. Mr. Harish Gaur. Ms. Pratiksha Shishra Suryavanshi. Mr. Pradeep Kumar Sahu.
Miss Simran Shuryovici. Miss Simran Shuryovici. Okay, sir. Dr. Deepak Jha, you can continue then. Okay, ma'am. Mr. Deepak Jha, you can continue. Yes, ma'am. Just I'm taking care for my presentation. Okay. वीडियो की क्या सॉन्ग तो अपनी पेन ड्राइव में देख लेना होगा Ma'am, it's visible. Yes, sir. Okay. So my topic is on the innovation in the field of the agriculture. So first of all, I will introduce about the topic. So agriculture is, as we know, the agriculture is the main backbone of the India, which is correlated with, which is linking about the humankind and nature and technology. All the three domains are interlinked and having a main loop covering the entire loop. So in this way, agriculture has been one of the strongest driver. That means which gives more thrust to the economy to develop their or to stand there on its own feet. Similarly, when we are talking about the agriculture in India, so that means it's covered the maximum 50% of the population in India. They are generating their revenues like this. In India, more than 60% of the population are engaging in the farming, contributing about the 18% of the country's GDP. But still, we see that it's very difficult to cope up with the poverty, and we are unable to develop the job opportunities for them, as they are already generating the revenue for us. It's very critical kind of situation for us that still they are generating the 50% of the entire land is for a fertile agriculture land, and they are contributing in the 18% of the GDP, and they don't have, still they are struggling for their survivals. So there are some review literature where I came the thought of this. So I will not take that much of time. So my objective of the paper is to know the latest trend in the agriculture, how the agriculture is moved, and with collaboration with the technological part, how we can enhance the agriculture theme to the general public, to just to attract them towards the agriculture. To know the innovation practice in the area of agriculture, there are a number of innovation things are going on in the country, and uh, it's a very, we can say it's a very fruitful kind of innovation. In the last to last presentation I have seen, there are a number of new discoveries are there through which we can develop more revenue, more ideas through the agriculture. So what kind of methodology I have taken? It's a data we have collected at the secondary source. It's through the research paper, government report, ICRA reports. So what are the actual latest trend? Increasing in the production of the food grain. Yes, if we have more creative, innovative ideas in the agriculture, if we have diversification in the agriculture, related with the olders, earlier we used to harvest only one crops in a year. Now we can able to new technological, new instrumentation, new innovation in the seeds, in the instrumentation, in the vegetable, in the, so we can cultivate almost 2 to 3 crops in a year also. So in this way we have to make it like that they can understand about the value of the agriculture, where they can generate the revenue, and definitely they are going to contribute for us. Horticulture is one of them, and its output in the presentation scenario, it's extremely very good. It's already tested, and many number of villages are doing like this. In the Rajasthan, there is an area where hydroponic agriculture is doing, and a villager is just developing his earning from his 7 acre of lands. He is getting the annual turnover of somewhere 4 to 5 crores of rupees. So it's only because of incalculating the new ideas, new technology, some kind of a new innovation with the new kind of thoughts. So yes, latest trend, as we have already discussed it.
So analyzing, yes, internet of the thinking, innovation in the agriculture. What kind of innovations we already have? We can get a lot of things from the internet. There, what kind of seasoning for agriculture we can do, what kind of seeds we are available, we can cultivate, and we can get the crops within a span of 4 or 3 months like this. There are a number of things are there. Maximum of us we are not aware. So agriculture robotic part is here. So in agriculture, robotic part is taking shape in the Indian agriculture. The latest trend in the technology, what is it? It's a fruit picking, harvesting, everything. It's a totally robotic, we can say. There are a number of instruments which is developed by the villagers or the harvester itself. In the Punjab, we will find a number of instruments are there which are they are developed themselves, and they are not right now. They have not patented, but it's a very good for the Indian soil. So artificial intelligence, if I'm talking about the artificial intelligence, in that case, if I'm going to use it as a drip irrigation systems, so I can go with the AI. So I can understand how much water I should be drain into my field, and where is the soil, and what kind of timings we can set to get it done. So these are the kind of where we can go with the artificial intelligence, and through a drone we can keep the monitoring about the entire our earth. So these are the ways through which we can understand. These are the actually agriculture trend and their impact on the so when we are talking about the impact of the agriculture, it's a demarcation over here. It's a internet. When we are talking about the internet, it's a 19%. Artificial when AI, it's a contribution of their contribution in the agriculture. When we were talking about the biotech, then it contributes the 7% in totality. Robotic 17%, because entire agriculture, when we're talking about the harvesting period, so it's almost 17% through which we can contribute about the robotics. So the main focus should be on the internet as well as for the robotic and the AI also. So definitely, if we have a lot of benefits, so we should have the challenges also in that. What we have studied over this, there are small and fragmented land holdings where it's very difficult to cultivate and very difficult to harvest also. So lack of trust, then the poor literacy. The literacy rate is very poor. So when we are talking about the communication part from the private sectors or from the government sector related with the agriculture government schemes and all, so it's very difficult to communicate. The communication process is very long. So these are the reason where we are not aware about how to go with the schemes and all, with the government is going to provide for us. Certain thoughts, again, same things. Agriculture marketing, we are not aware about the marketing strategies, what we can do for that. There are a number of things are there when we are talking about, as we have taken the example of the hydroponics. So the supply chain management is it's not a critical one, but it's a very lucrative kind of thing. It's very easy to get in the market for the agriculture marketing. So if the villages, they are aware about how to make the agriculture marketing, so they can penetrate into the new segment also. So your time limit is over. Sorry for the interruption. Okay. If anyone of you is joined the meeting and not presented it. Yes, ma'am. Seymour Joseph is here. Yeah, ma'am. I'm just sharing my. Hello. Ma'am, Ruchi Sangal is waiting for presentation. Yes, ma'am. We can present after her. Thank you, ma'am. Ma'am, I just sharing. Can I just start? Yes, ma'am. We can start, but your presentation is not visible. Your camera is on, I think. Yeah, I just shared it. I hope it is visible now. Hello, ma'am. Can I start now? Yes, ma'am. We can start, and the next one is Ruchi, ma'am. Okay. So today we are going to see about our research topic, that is transformative pedagogy in the context of gamification using principles of cognitive flexibility theory. So this is the study is conducted by James Thomas and Seymour Joseph from APJ Abdul Kalam University. We both are the research scholars from the same university.
What was the purpose of this study? So the purpose of the study is to study the effect of gamification and cognitive flexibility in the academic achievement of the students. Normally students, it's very difficult for them to keep the attention span of the students for a long span of time. So due to the technology era, we can include game elements such so that the students, we can increase the attention span of the students and thus the academic achievement. So cognitive flexibility helps students to think divergently and arrive at a solution to a problem by the multiple ways, which is necessary for in this 21st century. So the cognitive tasks are often considered as effortful and frustrating, and hence the inclusion of game elements in the cognitive task helps students to motivate themselves and engage in a particular task. So there were many studies which identified that people, those who are having greater flexibility in thinking, find solutions of a problem by creative thinking and analyzing different choices before they reach a particular conclusion. So our research questions were, does gamification improve the cognitive flexibility of the students? Or how does gamification help the language development of the students? Or what is the relations between the gamification and cognitive flexibility on the academic achievement of the students? And also, we are searching how this cognitive flexibility and gamification improve the motivation of the students, because that is the students, those who are intrinsically and extrinsically motivated, so they do by themselves, which promotes the active learning. So our hypothesis were, there is a significant relationship between the gamification and cognitive flexibility of the learners on the academic achievement. There is a significant relation between the gamification and cognitive flexibility on the language development of the students. There is a significant relation between gamification and cognitive flexibility on developing creative thinking in learners. So we have taken 60 students to identify whether their academic achievement. So the researchers were used experimental method to identify, to collect the data. There were two groups. One is the experimental group and the control group. So the researchers made their lessons based on their gamification techniques, which includes points, badges, and all. And the qualitative data was collected by using a questionnaire, which was the validity was found out by the researchers. And the findings after all this data analysis were done by using standardized t-test and also the Pearson relationship coefficient. So from the results, it is evident that the gamification helps to improve the cognitive flexibility, and hence it promotes the active learning. So there is a positive correlation between the academic achievement and the gamification. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Next one, Ruchi, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Reshmi waiting for presentation. Can I present that? Ruchi, ma'am, you are audible? Yes, ma'am. I'm sharing my screen. Ma'am, is it visible now? No, ma'am, your screen is not shared yet. There will be clear dots on your screen. You have to click that. And after that, you will get the option. Oh, okay. Just give a minute. Ma'am, is it visible now? No, ma'am. Not visible. Your camera is visible, ma'am. I'm sorry, ma'am. I'm unable to share.
Okay, ma'am, you may proceed with audio only. Okay, ma'am. Just give me 1 minute. And the time limit is for 5 minutes. Please, all the Okay. participants, pay attention. Ji. A very good evening to all. The topic of my research is bioaccumulation studies of heavy metals in polluted soils by earthworm species. So I am here to present my topic along with Anjana Kumari, Assistant Professor, Government College, Hamirpur, Himachal. Basically, the metal contamination in soil has become a serious global environmental issue due to the output of mining and smelting industries and the overuse of chemicals. Heavy metals are considered serious pollutants because they are toxic, non-degradable. Thus, their accumulation can can cause great risks to humans and as well as the ecosystem. Heavy metals release naturally by erosion of rocks, volcanic activity, forest fires, industries, paper mills, vehicles, human activities which directly affect the flora, fauna as well as the environment. Many anthropogenic activities increase the toxic heavy metals into the environment, and these activities are the household dust, batteries, disposable household materials, plastic, paints, inks, body care products, medicines, and household pesticides, which generate heavy metals in the environment. So the implications associated with the heavy metal contamination is of great concern, particularly in agricultural production system. Now, the earthworms are the soil macrofauna, which are regarded as soil ecosystem engineers, which play a keystone roles in soil formation and the decomposition of organic matter. About 80% of biomass of terrestrial invertebrates is represented by earthworms, which play an important role in structuring and increasing the nutrient content of the soil. Therefore, they can be a suitable bioindicators of chemical contamination of the soil in terrestrial ecosystem, providing an early warning sign of deterioration of soil quality. So basically, these earthworms accumulate a considerable content of metals in their tissues and could serve as biological indicators of contamination. Earthworms are widely recommended as model organism for monitoring the soil quality and assessing the ecotoxicity of pollutants. These earthworms are divided into 3 functional ecotypes according to their specific physiological habits, that is epigame and okay ma'am. So basically the purpose of this study is to study the metal bioaccumulation abilities of each earthworm species which are found in various habitats of district Hamirpur, Himachal. Anyone else is present and not presented yet? Please raise your hand virtually. Ma'am, shall I present? Santosh Priya ma'am. Ma'am, please, you can proceed. You are not audible, ma'am. Next, anyone else? Anyone else is remaining? Shri. Okay, we are in technical session 1.
I would like to invite Mr. Mahavidyalaya. Ma'am, shall I present? Yes, ma'am, you can present. You have only 5 minutes. Ma'am, please proceed. Your screen is shared. Unmute yourself firstly. आप फिर से ज्वाइन Ma'am, you are not audible. Santosh Priya, ma'am, you are not audible. निकाल रहे हैं ना Next, anyone next? ये हो तो गया हमने फोन निकालेंगे ना ऐसे ही बंद है Ma'am, shall I present? Yes, ma'am, you can present. Please be sure of 10 minutes. Hello, everyone. Ma'am, am I audible? Yes, ma'am, you are audible and the screen is also shared. Please continue. Let me introduce myself. I am Rashmi Kanya, research scholar at the University of Kerala. The title of my presentation is Behavioral Biases and Investment Decision Making, Learn to Make Right Choices. You all know that during the COVID-19 pandemic, global markets has experienced significant losses. After seeing the daily decline in the value of their investment, many investors sold their shares to avoid further losses. But the markets recovered very quickly that the investors who sold their shares made huge permanent irreversible losses. The reason for investor reaction here is behavioral biases. While confronted with in any decision-making situation, normal people don't go for analyzing each and every related aspect and search for every required information. Rather, they just employ simple heuristics for decision-making. These heuristics are generally useful for fast decision-making, but can often lead to errors known as biases. Behavioral biases are irrational beliefs or behaviors that can unconsciously influence our decision-making process. Our decisions can easily be affected by these biases. It is important for investors to be aware of these biases and to consider them when making investment decisions. Research objectives.
The purpose of this presentation is to discuss widely acknowledged behavioral biases, to identify their implication, and to recommend strategies to mitigate the impact of behavioral biases in financial decision making. The talk will be covering the following 6 behavioral biases: overconfidence, representativeness, availability, self-attribution, herding, and loss aversion. First one, overconfidence bias. Overconfidence bias is a tendency of people to overestimate their abilities. It causes traders to trade excessively in the market and can cause huge losses. We can avoid this by being realistic about the market and abilities as a trader. We should resist the temptation to believe that our expertise and judgments are superior to others in the field. Representativeness is a judgmental heuristics using which individuals make predictions about investments based on similarity of objects or events. For example, investors assume that by seeing a past 5-year return of a particular stock, they will think that the stock will continue to generate the return over the next 5 years, next future also. This can be overcome by making decisions which are backed by data rather than looking for similarity or past history. Availability bias. Here, people make decisions based on the most recent information available to them. For example, whenever a fund starts giving good returns, investors put their money into that fund without looking at its performance or the reason for its growth. To avoid this, we need to analyze whether the investment is right fit for us. Self-attribution bias. It is the tendency of people to attribute their success to their own actions and the failure to external factors like bad luck or influence by others. For example, when mutual funds are giving declining returns, investors always blame their CEOs for the mismanaging of those funds. To avoid self-attribution, we should have an idea of our own investment abilities. We should learn from our weakness and we should try to overcome them. Herding bias. Here we are doing something just because others are doing, like we are imitating our friends or family. We should not take decisions based on mere advertisements or influenced by others. We should make investment decisions which are based on our own financial goals and objectives. Loss aversion. It is the tendency to focus on avoiding losses more than making gains. For example, when the market starts falling, mutual fund investors start redeeming the units as they don't want to make further losses. To avoid this, we should not exit from our investment for temporary losses or temporary crashes that are happening in the market. Concluding, biases are the main cause of poor decision making, and it can cause huge destruction to our wealth. Therefore, we should understand various behavioral biases and should learn how to deal with them to make a wise investment decision. Thank you. Hello. I invite Mr. Shamsundar Palodi sir and Dr. Shweta ma'am. Please be on the stage and announce the best paper presentation for today's conference.
Hello. So, we are really grateful to RFI and Umiya Kanya Mahavidyalaya for organizing such a nice international conference. And actually, this international conference multiplies the scope of research, which we have studied in all these online presentations, we have seen in online presentations that so many researchers and so many different areas have been shown up. We were having papers from hospitality education, from chemistry, from geological studies, in agriculture, different social fields. Even active from agriculture sector also, then biomedical sciences like bioeconomics, then community grants and related studies and related investment. So, very big round of applause for all the participants who have shown their research efforts in this conference. And we are really thankful for RFI for organizing such a nice international conference. Mainly in the international conference, you can see that field area, different research areas are made available for the students. There are many students which are pursuing their masters, which are pursuing their bachelors, and therefore this is a ground view, this is a basic view for those students who want to prepare their research, their future research in different areas. And I just want to say that research doesn't mean that you have to get a particular area of research or you have to see a particular all the things which are involved in your daily life, your life is all things involved in research. So actually, research can be take idea from any of the aspects of a general life, like we have seen in these research papers. And making towards the best oral presentation in your online platform here. We don't have many papers, but the best paper. We have took different aspects of your presentation, like your studies, your research, your methodology, and your way of presentation. So, with all of these, we are having the best oral presentation. Miss Cindy Joseph. She has presented the work on cognitive flexibility theory from APJ Kalyan University. So we can have a round of applause for Cindy Joseph. Thank you so much. जितने भी पेपर प्रेजेंटेशन हुए बहुत ही स्तरीय और उम्दा थे और उनमें मैडम और हम मिलकर जिन जिन लोगों को यहाँ मार्किंग किया बेशक ये जो सर्वोत्कृष्ट पेपर जिनका रहा वो दूसरे पेपर की तुलना में बहुत अच्छा था, उत्कृष्ट था और बाकी पेपर भी बहुत अच्छे थे। कुछ लोगों ने ठीक से जुड़ नहीं पाए ऐसी स्थितियां भी, लेकिन कुल जब एक सार्थक ऑनलाइन जो प्रेजेंटेशन हुआ उसके लिए RFI और ये उमिया कन्या महाविद्यालय निश्चित तौर पर बधाई देता है। Congratulations to all of them. And here we are in technical session first. Soon we will be back with very function. Please stay tuned with us.
ये बता रहे हैं They always emerge as the strongest creature of God. So let's spread the message with the Nari Shakti group of our students, which is going to explain that not only Beti Padhao, Beti Bachao, but इस बार बेटों को भी समझाओ. Please give a big round of applause for our students.
देखो इस लड़की को कुछ शर्म ही नहीं है। देर रात तक लड़कों के साथ घूमती रहती है। संस्कार जैसी चीज इसे उसने कभी नहीं। बेटा इस दुनिया में तुम्हें जीना है तो खुद की रक्षा खुद ही करनी है।
Beautiful performance. The day we will know that women empowerment is the perfect definition when जब हमारी नारी शक्ति को बिना किसी सीमितताओं के रहने को और अपनी आजादी के साथ जीवन जीने को आराम से हम ये कह सकते हैं कि हम women really empowered तभी होगी जब वो freely रह पाए. Next one is the idea by Multidisciplinary. मध्य प्रदेश की हमारी रानी, मालवा की रानी, क्वीन, मध्य प्रदेश का हमारा जो हार्ट जिसे हम कहते हैं मालवा रीजन. महारानी अहिल्याबाई होलकर, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, उन्होंने लॉर्ड शिवा की बहुत बड़ी प्रस्तुति हुई, पूरे वर्ल्ड में शिवा के बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं और साथ ही उन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है. हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा अहिल्याबाई होलकर को ट्रिब्यूट किया गया है. प्लीज एंजॉय. गाने चला रहे हमारे जीवन को प्रभावित कर एक नई दिशा मिली है. ये कहानी ऐसे ही जिनका नाम है अहिल्या. 18वीं शताब्दी में जब अधिकतर स्त्रियों का जीवन पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों में चकरा हुआ था, तब एक नन्हे से दिल ने उन स्त्रियों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया और यही से आरंभ हुई एक मासूम शिवा बालिका से समाज सुधारक, शासक, राजमाता, लोकमाता, पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर बनने की महान गाथा.
Devi Ahilyabai Holkar, real-life example of women empowerment, who work for the upliftment of women by abolishing the critical of the Purdah system we all know very well. Presently connected, devoted to Umiya, who is only also son of the Lord. Our students are going to present how are sacrificing their life in the order to protect us so that we can live happily in our country. Having the pride of Indian culture, our students are depicting the sacrifices of Indian army. Please welcome them.
आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द संसद में रिपोर्ट करना है। यस सर, जय हिंद। हिंदुस्तान भर में घुसेगा भी, हम मारेंगे।
You all know very well, or I don't know you know or not. Indian Army is the fourth ranked army out of 140 countries in the world. So, invited by co-host Assistant Professor Darshi Sharma Madam for commencing the program further. सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का
प्रमुख अतिथि श्री अनुपम तिवारी जी विश्वास वैष्णव संस्था से अनुरोध करने के स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर राकेश चौहान जी कल्चरल एंड हर्षी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपसे अनुरोध करने के स्थान ग्रहण करें। मैं RFI के सभी सदस्यों से भी अनुरोध करूंगी कि कृपया करके मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं हमारे ट्रस्टी महोदयों से भी अनुरोध करूंगी कि कृपया करके मंच पाटीदार जी, महेंद्र पाटीदार जी और विजय जी पाटीदार। ये है मैडम यहाँ बेटा 2 मिनट रुका दीजिए। शेखर भाई आप सभी अनुरोध है कि कृपया कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम आपका परिचय कराना चाहूंगी। हमारे बीच उपस्थित विशेष अतिथि के रूप में श्रीमान अनुपम तिवारी जी। He is director of company Shri Fiber Private Limited. आप जोरदार तालियों से सर का स्वागत कर सकते हैं। He is a creative and performance-driven personality with an excellent eye for detail, unparalleled track record of employee satisfaction and deep passion for technology and innovation. An innovative, highly organized leader with a history of profound success in general and project administration. Hands-on, demonstrative leadership skills in multifaceted operations. Possesses a will and put the extra effort whenever needed and capacity to perform well in team environment. He has achieved so many projections in his life, but I'm just mentioning few of them. South Asian Chamber of Commerce and Industries have appointed him as the National Vice President. National Cultural Foundation NCF has awarded him with certification of recognition. He is honored with the Pride of India by Indo-UK Cultural Forum for outstanding contribution for society during pandemic COVID-19. He has so many professional achievements. Few of them are: his company found a place in Golden Book of World Record for largest number of ceramic products manufactured under one roof. Similarly, the company is registered in World Book of Record. The company is the winner of the Shri Excellent and Innovation Award conferred by CII Green Conclave in 2018. The company won Safety Award in 2018 from Green Tech Foundation. National Safety Counseling Award for company with the NSCI Safety Award in 2018 for Operation Health and Safety Policies in place of company. Economic Development Forum conferred Rashtriya Udyog Ratna Award to company in 2019. Thank you so much, sir, for giving the precious time to Shri Umiya Kanya Mahavidyalaya on this conference. आपका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महाविद्यालय के सचिव, ट्रस्ट के सचिव श्री महेंद्र जी पाटीदार के साथ RFI की तरफ से डॉक्टर सौरभ जैन जी से
कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अनुपम तिवारी जी का स्वागत करें। आज श्री तिवारी जी हमारे विशेष अतिथि भी हैं। साथ में आपको महत्वपूर्ण समाज के महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए RFI की तरफ से भी विशेष अवार्ड दिया जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे विभिन्न विशेष अतिथि साथ में हमारे अटेंडेंस सेशन चेयर के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे और आज हम हमारे मुख्य अतिथि के रूप में वैलिडिटी सेशन में आपके समक्ष उपस्थित हैं डॉक्टर श्याम सुंदर जी फलोट साहब। किसी सुंदर बात से कहा जाए कि किस तरह का शख्सियत का परिचय दे तो उसकी बड़ी ही समस्या हो जाती है। इतना लंबा जिसके योगदान हो समाज के लिए, जिनकी विशेषता इतनी हो, उनको बहुत कम ही करना अपने आप में बहुत ही बड़ी समस्या है। मैं क्षमा चाहूंगी कि आपकी कोई योग्यताएं या कुछ विशेषताएं मुझसे छूट गई हो। आपका एक औपचारिक परिचय देते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर जी फलोट इसके पूर्व भी महाविद्यालय को अपनी व्याख्यान और आशीर्वाद से लाभान्वित करते आए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर नई दिल्ली द्वारा दिनांक वर्ष 2096 में आयोजित राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में देश में प्रथम स्थान। अनेक अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों, कवि गोष्ठियों इत्यादि में देश की उपलब्ध प्रतिष्ठित कवियों के साथ कविता पाठ कर आपके मंचों का संचालन भी किया है। अनेक अंतर महाविद्यालयीन एवं राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में विजेता के रूप में आपका नाम हमेशा रहा है। इंदौर के लोकल टेलीविजन, OTT एवं जनमंच, चुनावी चर्चा तथा हमारे मेहमान आदि शिक्षाकालीन कार्यक्रमों में आपने सफलतापूर्वक संचालन किया है। आकाशवाणी इंदौर से अब तक लगभग 40 से भी अधिक वार्ताओं, भाषणों का प्रसारण हो चुका है, जिनमें आपने महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। इंदौर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, पत्रिका, राज एक्सप्रेस, पीपल्स समाचार, नव भारत, चौथा संसार, स्वदेश, लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, सांध्य दैनिक, अग्निबाण, सिटी ब्लास्ट, न्यूज टुडे आदि में लेख, लघुकथा, रिपोर्टिंग, कॉलम आदि भी प्रकाशित हुए। अनेक कड़ियों को छोटा करते हुए अंत में आपने भी अनिला विश्वविद्यालय में इंदौर की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध युवा संस्कृत प्रतियोगिता के दल का प्रशिक्षण एवं सह संयोजन भी किया है। उमिया कन्या महाविद्यालय तथा RFI कॉन्फ्रेंस ऑफ इनोवेशन में आपको मुख्य अतिथि के रूप में पाकर बहुत लाभान्वित है। बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट युवराज जी पाटीदार और RFI के डॉक्टर संजय प्रसाद जी से कि वे आए और डॉक्टर श्याम सुंदर फलोट साहब का स्वागत करें। हमारे टेक्निकल सत्र में जूरी का रूप अदा करने वाले सेशन चेयर हमारे बीच अभी यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता भाटिया मैडम, डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस, शासकीय महाविद्यालय राव। She is an assistant professor in botany, Government College Rao, Indore. She has 18 years of teaching experience in the same field, naming World Book of Records, London for research with social purpose. She worked as a subject expert and presenter in National Mission on Education through ICT and have around 33 lectures on Swayam.
She worked as a research scientist in research project at Government Worker Science College. She worked as a research fellow in Central Food Technological Research Institute, CFTRI, Mysore. She won Senior Scientist Award in International Conference. She won 2 Young Scientist Awards in National Women's Science Congress and Anglo-Indian Science Congress. Not only that, she won Best Oral Presentation Award, conducted various seminars, workshops as a convener, and has 15 national and international publications. Her 4 chapters is published in international books. She has invited in various talks in webinars, seminars, and conferences. She working as facilitator for the syllabus formation under new education policy in Madhya Pradesh Higher Education Department. She is working as validation board member for e-content development in MP Higher Education Department. Presently, she is a member of Board of Studies, Botany, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. Madam Umiya Kanya Mahavidyalaya, RFI is grateful for having you in this session as a chief guest. आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा छाजे मैडम तथा वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सरिता शर्मा मैडम से मैं डॉक्टर श्वेता खाड़िया मैडम का स्वागत करती हूं। मैं प्रकाशनी मैडम से भी अनुरोध करूंगी कि वे आदरणीय श्वेता खाड़िया मैडम के स्वागत के लिए आगे बढ़ाएं। इनके साथ ही हमारे बीच दूसरे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर राकेश चौहान जी, आप प्राचार्य हैं महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के। Dr. Rakesh Chauhan ji has having experience of 26 years in academics and 6 years in industry. He is a management faculty with specialization in finance, operation, and information technology. He is the director in Maharshi Institute of Management in Indore. He did his MBA from Prestige Institute and PhD from Institute of Management Studies in Indore. He had published 26 research papers in various national and international journals. He guided 6 decorated scholars for their PhD thesis. He has reflected on role of capital market in economic development and had published a book on approach of business process and systems. Thank you so much, Rakesh Chauhan sir, Dr. Rakesh Chauhan sir, for having you on this program. आदरणीय राकेश चौहान जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर ओम प्रकाश जी से साथ ही RFI के डॉक्टर अजय जैन जी से कि वे आगे आए डॉक्टर राकेश चौहान जी का स्वागत करेंगे। इनके साथ ही हमारे इस सम्माननीय मंच पर उपस्थित हैं श्री परितोष अवस्थी जी। मैं उनका स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी राम कृष्ण जी पाटीदार जी, कॉलेज सेक्रेटरी, एंड श्री युवराज जी पाटीदार। डॉक्टर परितोष अवस्थी जी का स्वागत करें।
क्षमा चाहूंगी, आप वैष्णव कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर कान्या शास्त्री जी। अभिवादन और वंदन की इस लीला की बात आपका समय नहीं लेते हुए व्याख्यान की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी आज की हमारे स्पेशल गेस्ट श्री अनुपम जी तिवारी सभा के लिए आए और सदन को उद्बोधन दें। जो उमिया कॉलेज के फाउंडर और जो आज हम इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, हमने जो कॉन्फ्रेंस आपने इंटरेस्ट रखी है उसके लिए शुभकामनाएं दूंगा और एक बहुत ही अच्छा कदम आप लोग इस देश के लिए कर रहे हैं, उसके लिए आपको सब बधाई की बात है। अब यहाँ राजीव शर्मा साहब वैष्णव जी तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, बच्चे हैं ये मातृशक्ति को याद देवी सब कुछ मातृशक्ति को मेरा सादर नमन और समाज को मेरा सादर प्रणाम। मैं अभी जो यहाँ के कॉलेज के जो संस्थापक हैं और जो अभी कार्यभार देख रहे हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा एक प्लान है, यदि आप लोगों को कभी भी कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग या इंडस्ट्री ट्रेनिंग की आवश्यकता रहती है तो आप अप्रोच कर सकते हैं और उसके लिए हमेशा ये श्री श्रमिक परिवार आपके लिए रहेगा। और एक छोटी चीज, छोटी बच्चियां मेरी बहनें ये बैठे हैं, मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा, सर इसको थोड़ा सा अपन ये देखें कि आप लोग बहुत सारी आजकल रील्स कर रही हैं, कोई ज्योतिष के कुछ बताता है, कुछ इस तरह की जो गतिविधि होती है, पर अपने जीवन को हमें भी अच्छा जीना चाहिए। तो ये कोई प्रवचन नहीं है, सब लोग बोलते हैं, बहुत सुना होगा आपने, लेकिन बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अपने दैनिक जीवन में बता रहे हैं, तो हमारी उत्तर उन्नति होगी। और जो ज्योतिष से हमारे जीवन को कैसे लिंक किया है उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है, जो जितने अपने जो लोग हैं और हमारे उनका जो प्रभाव है मनुष्य में जो पड़ता है उसका, और जो हम जो दैनिक जीवन जीते हैं, यदि उन दोनों का सामंजस्य हो जाए तो आदमी बहुत उन्नति कर जाता है। जैसे एक छोटा उदाहरण, हम यदि अपने पिता को सूर्य का रूप बोला गया है, सूर्य से उनके, तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग दादा ताऊ जी पिताजी या पड़ोस आस पड़ोस के बड़े वृद्ध लोग हैं उनका हम सम्मान करेंगे तो हमारे जो सूर्य प्रबल होगा उसके, तो सूर्य प्रबल होने से हमारे, अब आप समझ सकते हैं सूर्य ऊर्जा का मेन केंद्र है, और हमारी जो माँ है वो चंद्रमा का वो माना गया है उसको। तो यदि हम अपनी माँ की, दादी माँ और जो अपने मौसी, यदि इनका हम सम्मान करें, इनका कहना माने और जो इनको इनके प्रति हम अपनी भावना रखेंगे तो हमारा चंद्र बलवान होगा। और सेम ऐसे आता है बुद्ध के लिए, बुद्ध यदि हम अपने जो नियत साफ रखेंगे, हिसाब किताब अच्छा रखें, नेक नियत रखें, ईमानदार रखेंगे तो हमारा बुद्ध स्ट्रॉन्ग होता है। फिर मंगल भाई को रिप्रेजेंट करता है, यदि हम अपने भाई से, बहने अपने भाई से, भाई से और ये कजन हो, चाचा, कोई भी अपना पड़ोस में भी हो, तो हम यदि उस तरह के संबंध उससे बनेंगे तो हमारा मंगल स्ट्रॉन्ग उससे होगा। बृहस्पति के लिए हम लोग मंदिर जाए, पूजा पाठ करें और हमारे गुरुओं का सम्मान करें तो हमारा बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा। शुक्र के लिए हम यदि शुक्र तो हमें साफ सुथरे रहना, जैसे बताया गया ना, रोज स्नान ध्यान कराने के लगाए, मतलब पूरा से हमारा शुक्र उससे स्ट्रॉन्ग होगा तो वैभव विलासिता व्यक्ति के अंदर आएगी। और जो बताया गया है, जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, निर्धन हैं, उनकी मदद करेंगे तो शनि और राहु हमारा सपोर्ट करते हैं, तो हम उस बारे में काफी अच्छा वो कर सकते हैं। एक और चीज है केतु ग्रह भगवान का, तो केतु हम निकलते करते हमारे पुराने मेरे दादाजी और बाकी लोग बताते हैं किसी मंदिर से क्यों अंदर दर्शन नहीं करते, शिखर दर्शन कर ले कम से कम,
तो यदि आप शिखर के दर्शन करते हैं तो केतु को शिखर का वो बताया गया। तो आप इस तरह के अपने दैनिक जीवन में भी अपने इस तरह के चेंज लाते हैं तो मतलब आपको काफी अच्छा अनुभव होगा और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा जीवन जीने में और आपको ये पाएंगे कि उन्नति आपकी हो रही है। और जो भी लोग हैं वो एक दूसरे की हम मदद करें। हम क्या है, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं बहुत छोटे पहले नौकरी करता था, गवर्नमेंट नौकरी होगा, लेकिन एक नेचर की हेल्प करने के लिए, भले किससे काम हो नहीं हो हमारा, हम लोगों की मदद जरूर करें, उससे एक अंदर कॉन्फिडेंस आता है और ईश्वर परम सत्ता हमको सपोर्ट करती है। जो आजकल क्या होता है कि जो दोस्ती भी करते हैं तो वैसे करते हैं तो पावरफुल व्यक्ति है उससे टच होने की कोशिश करते हैं कि चलो हमारे काम आएगा, जो नहीं भी है बेचारा जिसका कोई हम मतलब बिना किसी टेंशन के उसकी हेल्प करें, अपने माता पिता का कहना माने और यही मैं वो करता चाहूंगा ताकि आप सबकी उन्नति हो। और मुझे बुलाया उसके लिए स्कूल प्रशासन का, कॉलेज का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे बहुत कुछ सुविधा सर्वे शब्दों सर्वे विभाग में सभी लोग सुखी संपन्न हो, भगवती की कृपा सभी पे रहे और धन्यवाद। जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात पोस्ट अवेटेड स्पीच I would like to request Dr. Shyam Sundar ji for Lok Sabha. So please come forward and bless us with the words. मंचासी परम श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर राजीव जी शर्मा साहब, इस कोने पे बैठे हैं युवराज जी और इस कोने पर बैठे हुई हैं डॉक्टर अनुपमा छाजे। अपने मालवा में कहते हैं युवराज भाई जो कोना दाब के बैठते हैं उनको काकड़ का भेलू कहते हैं। ये RFI और माँ उमिया कॉलेज का मंच है जहां पर यहाँ से लगाकर यहाँ तक लक्ष्य प्रतिष्ठित लोगों की एक बड़ी श्रृंखला जिसमें इतने प्राचार्य हैं, डॉक्टर पारितोष साहब, विनोद खत्री साहब, सौरभ जी, हमारे ये प्राचार्य ही हैं, RFI के प्राचार्य मान सकते हैं उनको। अजय जैन भाई बैठे हैं, मनीष दुबे जी बैठे हैं, सर हैं महर्षि चौहान साहब प्राचार्य जी, इधर हार्डिया मैडम बैठी है, आदरणीय हमारे भाभी जी की बहन बैठी हुई हैं, पाटीदार साहब से लगाकर यहाँ से वहां तक सब जाने। संजय भाई जो है वो बिल्कुल गुमशुदा की तलाश में, लेकिन इतने बढ़िया गंभीर मुद्रा में कोई रिसर्चर ही बैठ सकता है। ऐसे तमाम सारे अच्छे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये बड़ी तादाद में मात्र शक्ति जिन्होंने आदरणीय तिवारी जी के मुखार नृत्य से पूरे 9 ग्रह का लाभ या अध्यात्म के रूप में प्राप्त किया, आप सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप सारे ग्रह को साधने का एक ही काम करना कि में जाकर इनके उद्यम में उद्यमी बनने की एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी पाठशाला वहां मिल सकती है, इसलिए वहां जाकर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेना। ये RFI और माँ उमिया कॉलेज ने आपको अच्छा सौभाग्य का अवसर दिया है कि तिवारी जी जैसी शख्सियत से आपको परिचित करवाया। मैं कुछ छोटी सी बातें ज्यादा इसलिए नहीं करूंगा कि मैडम ने इशारा कर ही दिया है, ज्यादा वक्त है नहीं। गुरुजी जन्म शताब्दी समारोह के वक्त एक किताब निकली थी समरसता के सूत्र। उस किताब के आमुख पर तात्कालीन सरसंघचालक जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी और वो बात का सार्थक ये था कि नर 4 तरह के होते हैं, एक नर पिशाच, एक नर पशु, एक नर और एक नरोत्तम। बताना मैं ये चाहता हूं कि ये जो इनोवेशन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रमुख विषय नवाचार, भारत के अतीत के प्राचीनतम सिद्धांतों, परंपराओं, परिपाटियों और संस्कारों की तह में
नवाचार कहाँ से शुरू होता है। और मैं फिर राउंड तक आऊंगा, क्योंकि राउंड के मंच पर खड़े होकर अपनी बात कह रहा हूं। तो वो जो नर निषाद से लेकर नरोत्तम तक की यात्रा है वो ही नवाचार है। क्योंकि नर निषाद जो है प्राचीन काल में एथेंस में एक बड़े मैदान में पिंजरा लगा दिया जाता था। उस पिंजरे के चारों तरफ कुर्सियां लगाकर लोग बैठ जाया करते थे। फिर उस पिंजरे में भूखे शेर को डाल दिया जाता था। फिर किसी कैदी को उठाकर उस पिंजरे में डाल दिया जाता था। वो भूखा शेर उस कैदी की बोटियां नोच नोच कर खाता था। वो चारों तरफ कुर्सियां लगाकर बैठने वाले उस दृश्य का देखकर उपहास उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। इसको नर निषाद कहा गया। फिर होता है नर पशु, यानी किसी खाते पीते व्यक्ति से यदि गरीब भूखा बच्चा किसी रोटी की गुहार करे, तब वो खाता पीता व्यक्ति उस गरीब भूखे बच्चे को रोटी का टुकड़ा ऐसे फेंक के दे जैसे किसी कुत्ते के पिल्ले को रोटी का टुकड़ा दे दिया गया हो। और वो बच्चा जो भूख से परेशान है वो छिपट कर उस रोटी के टुकड़े को खाए, तब वो खाता पीता व्यक्ति इसको देखकर उसका मजाक उड़ाए, उसका उपहास उड़ाए। इसको कहते हैं नर पशु। नर वो होते हैं जिसमें संवेदना तो होती है, लेकिन स्वार्थ से परिपूर्ण। भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोसी के घर में, इसको कहते हैं नर। और नरोत्तम वो होता है जो पारमार्थिक प्रयोजन का इस्तेमाल करते हुए दूसरों की मदद, सहायता और सहयोग के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दे, यानी जिसमें संवेदना भी है, जिसमें निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रेरणा भी है। और वही नवाचार है जिसे हम नरोत्तम कहते हैं। इसलिए जो नर निषाद से लेकर नरोत्तम तक की यात्रा है वो नवाचार है। और ये नवाचार यदि किसी ने सबसे पहले यह शुरू किया था तो प्रोफेसर राजीव शर्मा, इसी राउंड नगर के रहवासी, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। राजीव शर्मा साहब जिस राउंड में उस जमाने में रहा करते थे, जब वो प्राध्यापक भी, पत्रकार भी बाद में बने थे, प्राध्यापक भी बाद में बने थे, क्योंकि युवराज भाई उनके बचपन के मित्र हैं। युवराज भाई उनके मोर्चे के पहले अध्यक्ष थे, इसलिए इनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। उस जमाने में जो नवाचार प्रोफेसर राजीव शर्मा साहब की बुद्धि का एक प्रकल्प इस राव नगर में शुरू हुआ था, जिसका नाम था क्रांतिकारी छापामार मोर्चा। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा मोर्चा बना ही नहीं, न भूतो न भविष्य में, जिस सिद्धांत को क्रांतिकारी छापामार मोर्चा के रूप में प्रतिपादित करने वाली दो महान शख्सियत नवाचार की प्रतिबिंब बनकर, प्रेरणा बनकर यदि आज इस मंच पर विराजित है, तो सच मानिए अरविंद केजरीवाल खरीद लगते हैं इनके प्रकल्प के आगे। यदि ये आज उस प्रकल्प को जारी रखते तो हिंदुस्तान की सरहदों में इनके नाम का डंका, इनके नाम की, जो आपको शायद पता नहीं, आप केवल ताली बजाकर इस बात को समझ रहे हैं। उस जमाने में इनके क्रांतिकारी छापामार मोर्चा के भी 3 सूत्र थे। जिन 3 सूत्रों को लेकर अनुपमा मैडम ने यहाँ इतनी बड़ी, और अजय जैन साहब और उनके मनीष भाई, सौरभ सर, इन लोगों ने मिलकर जो इतनी बड़ी, संजय भाई, इन लोगों ने ये जो इतनी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है, वो नवाचार के 3 सूत्र इनके थे। पहला निवेदन, दूसरा आवेदन और तीसरा धनादन। ये जो निवेदन, आवेदन और धनादन इनके क्रांतिकारी छापामार मोर्चा का जो प्रमुख सूत्र वाक्य था, आपको आश्चर्य होगा कि ये नवाचार क्यों था। क्योंकि उस जमाने में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तरकीब प्रोफेसर राजीव शर्मा साहब के उस, जब वाद विवाद के लिए यहाँ विरोधा हुआ करते थे, उस जमाने में इनका नाम था। अब तो इंटरनेशनल लेवल पर प्रोफेसर राजीव शर्मा साहब का नाम न जाने कितनी बुक्स में, बल्कि उपाधियां देने वाले संस्थान के डायरेक्टर के रूप में प्रोफेसर राजीव शर्मा साहब हैं। उनके मस्तिष्क में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो 3 सूत्र बनाए थे, राउंड क्षेत्र में उस जमाने में इनका डंका ऐसा बोलता था कि यदि क्रांतिकारी छापामार मोर्चा कोई पर्चा लगा दे तो उस दफ्तर के सारे कर्मचारी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर बैठ जाया करते थे। क्योंकि जब ये निवेदन करते थे, जिस क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार होता था, चाहे वो
टेलीफोन विभाग हो, पोस्ट ऑफिस हो, बिजली बोर्ड हो, सबसे पहले जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करता था, ये युवराज भाई और राजीव शर्मा साहब की टीम उसके पास जाती थी, उनसे निवेदन करती थी उनके बड़े अधिकारी से कि इन शख्स ने ये भ्रष्टाचार किया है, 8 दिन का आपको समय दिया जाता है, इस भ्रष्टाचार को दुरुस्त कर लीजिए, ये निवेदन। इसके बाद अगर 8 दिन तक वो भ्रष्टाचार दूर नहीं होता तो इनकी टीम फिर जाती, फिर एक आवेदन लेकर जाती थी कि फलाना फलाना व्यक्ति ने इस किस्म का भ्रष्टाचार किया है, आपसे आग्रह है कि 8 दिन में भ्रष्टाचार को दुरुस्त कर लीजिए, अन्यथा क्रांतिकारी छापामार मोर्चा धनाधन की प्रक्रिया पूरी करेगा। आप माने न माने, ये आवेदन जाने के बाद कई दफ्तर 8-8, 10-10 दिन के लिए बंद हो जाया करते थे। वो अधिकारी जिसके नाम से भ्रष्टाचार की अर्जी देते थे, वो अधिकारी तो साल भर की छुट्टी लेके चला जाया करता था। वो जो नहीं जाता था, इनकी टीम वास्तव में धनाधन का जो कार्य करती थी, उस धनाधन के कार्य ने पूरे गांव में एक पहल का मचा दिया था। वो परिणाम 1994 में युवराज भाई पहली बार पार्षद बने इसी गांव के, उसी गांव में पार्षद बनते थे। एक बात बता दूं, इसी को हम नवाचार कह सकते हैं, और ये नवाचार मातृशक्तियां बेटी है। मुझे खुशी इस बात की है कि मंच पर जब हम यहाँ सामने बैठे थे तो इतनी बेहतरीन प्रस्तुतियां, सर राजीव शर्मा साहब का एक बहुत अच्छा गीत सीरीज है, पूरी गीतों की सीरीज है। ये जो वुमन एम्पावरमेंट को आपने प्रदर्शित किया, महिला सशक्तिकरण की बात को लेकर इनके गीतों की श्रृंखला है। मैं खुश हूं कि इस महाविद्यालय में जहाँ इतनी सारी छात्राएं इतने बढ़िया बढ़िया नृत्यों और इतने बढ़िया बढ़िया विषयों को लेकर अपनी प्रस्तुति देती है, तो सच में ये मन कहता है कि लड़की यदि भाभी है तो ममता का रूप है, मावी मौसी हुआ है तो समता का रूप है, और लड़की यदि बेटी है तो गुनगुनी धूप है, और लड़की यदि माँ है तो परमात्मा का रूप है। उस इतने सारे रूपों को कहते हैं ना, गम की चोटें जख्मों पर औलाद से ज्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। वो सारा यहाँ पर जो प्रतिपादन हुआ, हम कहते हैं माँ की कोई उपमा नहीं होती, क्योंकि माँ कभी उप माँ नहीं होती, उसको साकार करने वाली स्वीकारोक्ति आपको जो यहाँ व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत की, ये सच है कि इस महाविद्यालय की तालीम आपको शिखर पर पहुंचाने का अभियान लेकर चल रही है। आरतिया मैडम सामने बैठी है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो भी यहाँ छात्राओं को इसी तरह से तैयार करती है। बस एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा, ये सब युवा हैं, और सौभाग्य से आदरणीय पाटीदार बंधुओं, इस मंच पर बैठा हुआ एक शख्स भी युवा है, क्योंकि युवराज के साथ बैठा है। ये सब युवा का संबंध कभी उम्र से नहीं होता, युवा की कोई उम्र थोड़ी होती है। जो कर्मठता से अपने बौद्धिक चेतना के साथ युवा, उसको कहते हैं कि जब यूक्रेन में भारत का तिरंगा दिखा दिया जाए तो दुश्मन देश के सैनिक सैल्यूट मारकर यदि आगे बढ़ जाए, इस दृश्य को देखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी भारत का तिरंगा उठा ले, जिन दुश्मन देश के लोगों को भी तिरंगा उठाने की ताकत यदि किसी ने दी तो वो भी तो युवा ही है। तो ऐसे युवा कोई उम्र से नहीं होती, विचारों से युवा होना चाहिए। तो इस मंच पर सब युवा बैठे थे, युवा शब्द के अक्षरों को उल्टा कर दो तो वायु हो जाता है। जैसे वायु वातावरण में भ्रमणशील होती है, पूरब की परिपक्वता से लगाकर पश्चिम की पुनर्रचना तक, और उत्तर की उत्तरापेक्षा से लगाकर दक्षिण की प्रदक्षिणा तक सिर्फ युवाओं का साम्राज्य है। युवा केवल स्वप्न दृष्टा की नहीं, बल्कि युग निर्माता भी साबित हो रहा है। युवा क्रीड़ांगन का सिरमौर ही नहीं, बल्कि संरक्षण का गुलामी है। युवा कल्पना और सुनीता के रूप में अंतरिक्ष विजेता ही नहीं, बल्कि ए.आर. रहमान के रूप में वंदे मातरम का नया सांगीतिक घोष भी है। और युवा युवराज के बनने का विस्फोट नहीं, बल्कि विक्टर की लोहा बर्मा की चोट भी है। और युवा कार्मिक पर लहराता
ऐसे युवाओं पर हमको नाच भी है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि विचारों को बोलते हुए ज्वालामुखी का लावा में युवा, शक्ति के दुख की तपन से तपा हुआ मावा है युवा, सोए हुए सांप को छिड़ने की फंकार है युवा, स्वर संगीत और वाद्य की वीणा की चिंता है युवा, एवरेस्ट से ऊंची चट्टान है युवा, गौबर से गहरी धार है युवा, सागर के ज्वार घाटों झगड़ों से युक्त तूफान है युवा, और असंभव को संभव बना देने का आह्वान है युवा। इन युवा साथियों ने वो असंभव काम संभव करके यहाँ दिखाया। जब ऐसे युवा नेतृत्व को साथ में लेकर RFI और मां उमिया कन्या महाविद्यालय के सौजन्य से इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस गांव के इस छोटे से क्षेत्र में आकर की, हमने जब देखा कि दुनिया भर के लोगों ने, मुझे पता चला अजय भाई से 1100 लोग पूरे विश्व में 74 देशों के 1100 लोग RFI के साथ जुड़े हैं। ये RFI के इस नौजवान साथी की ताकत है, जिसने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में अपने शोध क्षेत्र की परचम फहरा दी और दुनिया भर के लोगों को जोड़ दिया। जिस रिसर्च को लेकर, जिस शोध को लेकर यहाँ आकर विश्व स्तर पर कोई काम करने का एक दौर का नौजवान आगे बढ़ता है, ये फख्र की बात है, ये गर्व की बात है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां अजय भाई और उनकी टीम के लिए बजाइए और आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं। बस ऐसे ही कोई न कोई दीप जलाते रहे, क्योंकि दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि हो गई है दीप, पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि हर बुनियाद मिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। फकत हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग, लेकिन आग चलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की अगर ऐसी समापन हो तो लगता है कि हम जैसे हैं वैसे ही बैठे रहें और आदरणीय पलोट सर को और शर्मा जी को ऐसे ही सुन सकते हैं। क्या कहते हैं? तालियों से दिया। मैं फिर से बोलना चाहूंगी, हमारे बीच मंच पर हिंदी के परम विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं। मैं पुनः बोलना चाहूंगी, आपको सुन के दोनों को ऐसा लगा कि अभी हम जैसे हैं वैसे ही रहे और आप बोलते ही चले जाएं। बहुत बढ़िया। कदाचित आप लोगों का ही आशीर्वाद रहा होगा कि वैसे तो मैं अंग्रेजी की प्राध्यापक हूँ, लेकिन हिंदी में लिखने का कुछ साहस किया है। यदि व्याकरणगत और साहित्यिक अशुद्धियां हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप दोनों को सुनकर मेरे मन में अचानक एक भाव आया कि कुछ 3-4 महीने पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी। समंदर को उसकी हदों के परे रहने दो, दरिया को दो किनारों के बीच रहने दो। समंदर को उसकी हदों के परे रहने दो, दरिया को दो किनारों के बीच बहने दो। एहसास भीगने का कहीं सुनामी न ले आए। आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप बोलते ही चले जाए और आपके शब्दों की सुनामी आ जाए। समंदर को उसकी हदों के परे रहने दो, दरिया को दो किनारों के बीच बहने दो। एहसास भीगने का कहीं सुनामी न ले आए, इसलिए हम अभी जैसे बैठे हैं हमें वैसे ही बैठे रहने दें। इस कार्यक्रम की समाप्ति बिना धन्यवाद दिए नहीं हो सकती, किंतु उसके पूर्व हमारे बीच उपस्थित है विश्वास वैष्णव जी। तो आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अनुपमा छात्रे मैडम और श्री ओम प्रकाश जी शेख साहब के साथ RFI के रिप्रेजेंटेटिव सर से भी, जैन सर से भी, कि वे श्री विश्वास वैष्णव जी का 100 शिष्टों